नमस्कार। सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी पहले चेयर से सुन लें आप। हमारे माननीय, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, मैं सबको सुनूंगा। मनीष जी मैं सुनूंगा, पहले बैठ जाइए। गौरव जी बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, मैं दूंगा मौका, आप बैठ जाइए, हाँ मौका देंगे, हाँ लेकिन पहले हमारे जो 20 बैलेट के हैं उनको देंगे पहले। अब बैठ जाइए। काइंडली यू एक्सेप्ट माई, प्लीज। आई एम नॉट अलाउइंग यू। I think so nothing will go on the record. If I will allow you, if I am ready to say I will allow you, this is not the procedure. You are a senior member of parliament, Mr. Manish Tiwari ji. माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र मैं 0 आवर जब शुरू 0 आवर पहले क्या रखे जाए, पहले पत्र रखे जाएंगे सब, फिर 0 आवर होगा। पहले 0 आवर होने, नहीं विषय नहीं। जब 0 आवर होगा, गौरव जी काइंडली यू कोऑपरेट मी, मनीष जी काइंडली यू कोऑपरेट मी, मनीष जी एंड गौरव जी काइंडली कोऑपरेट। श्री जतिन प्रसाद जी, श्री जतिन। आदरणीय महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पे मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची की क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री एसपीएस बघेल जी, एसपी सिंह बघेल। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लेखित प्रपत्र सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। आइटम नंबर 5 श्री बांडी संजय कुमार जी। मनुष्य कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री पी चंद्रशेखर जी। Sir, I lay on the table of the House the documents mentioned at serial number 6 of today's list of business on behalf of my colleague, Shri Kamlesh Paswan ji. Thank you. आइटम नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। अभी बोलिए। श्री पवित्र मार्केट मैं आ गया हूं। महोदय, आपकी अनुमति से मैं पवित्रा मार्केट में। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के अनुसार कपड़ा मंत्रालय के क्रमांक 7 पर उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 महासचिव। Sir, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 24th March 2025, agreed to the amendments made by Lok Sabha at its sitting held on the 12th March 2025 in the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024 as passed by Rajya Sabha. Sir, I have also to report a message from Rajya Sabha regarding appointment of one member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. आइटम नंबर 9 डॉक्टर फगन सिंह जी कुलस्ते। आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 9 पे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 27 जनवरी 2025 से 22 जनवरी 2025 तक रांची, कोलकाता और रायपुर के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10 श्री राजमोहन उन्नीथन जी। Action taken statements on the first, second, third and fourth action taken reports in Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name
in today's list of business, sir. Item number 11, Shri Trivendra Singh Rawat ji. Item number 12, या Shri Tapir Gaon ji हैं. Item number 11. Sir, with your permission, I raise to lay on the table the 387, 388, 389, 390, 391, 392, and 393 report of Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest, and Climate Change on the demand or grant as listed against my name at serial number 11 in today's order paper. Thank you. Item number 12, Srimati June Malia ji. I rise to lay on the table a copy each of the 375th, 376th, 377, 378, and 379th reports of the Standing Committee on Transport, Tourism, and Culture listed against my name at serial number 12 in today's list of business. Thank you. Item number 13, Shri PP Chaudhary ji. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण का समय मानसून सत्र 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाती है। प्रश्न यह है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमारे पास आज के 0 आवर और पिछले 3 दिनों के 0 आवर हैं, तो करीब 80 0 आवर के प्रस्ताव हैं जो माननीय सदस्य लोग बोलना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि 2-2 मिनट में अपनी बात आप कहें, इसलिए आग्रह है। डॉक्टर राजीव, ये खत्म, ये खत्म हो जाए। नहीं, आप ये देखिए, जिसका बैलेट है, मनीष जी आप जानते हैं, नहीं बिल्कुल महत्वपूर्ण है, हर विषय महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिसका बैलेट है आज उसके बैलेट हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको लेते हैं। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। नहीं, मैंने कहा शून्य प्रहर तो निरस्त हो गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, किसी को स्वीकार नहीं किया। आज मुझे डॉक्टर राजीव भारद्वाज, आपने एक बड़ी ज्वलंत समस्या पर अपनी बात रखने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आपके द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र के गेहूं उत्पादक किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, 123 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी कम बरसात हुई हो। हिमाचल प्रदेश में 90% से सामान्य से 90% कम बारिश हुई है इस बार, और हिमाचल प्रदेश में 3,26,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है गेहूं की। केवल 10% खेती हो चुकी है, केवल 30,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती हो पाई है। इसके लिए मैं कृषि मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसानों की स्थिति बहुत खराब है हिमाचल प्रदेश में, और जो 30,000 हेक्टेयर खेती हुई है उसमें भी कितनी ईल्ड आएगी इससे कहा नहीं जा सकता। पूरे हिमाचल प्रदेश में 3,26,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यह है कि उनका समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करें। और अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा संरक्षण दें, मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे संरक्षण दीजिए प्लीज। जिस क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूं उस क्षेत्र में केवल गेहूं की खेती नहीं, बड़े बड़े बागवान हैं, दशहरी आम के बड़े बड़े बाग हैं, अमरूद के हैं, किन्नू के हैं। वो बागवान बिल्कुल सूखे की मार से त्रस्त हो चुके हैं। और मैं नूरपुर क्षेत्र की यदि बात करूं, मैं आपसे केवल ये प्रार्थना करना चाहता हूं, कृषि मंत्री महोदय कोई दल भेजे हिमाचल प्रदेश में, और मेरे लोकसभा क्षेत्र में जिला कांगड़ा में 92,000 हेक्टेयर भूमि पर
किसान खेती करता है। चंबा में 30,000 हेक्टेयर के भूमि पर किसान खेती करता है। उनकी चिंता की जाए, केवल गेहूं नहीं, नकदी फसलें भी तबाह होने के कगार पर है। कृपा करके उनको उचित मुआवजा दिलाने की कृपा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कादियाम काव्या जी, डॉक्टर कादियाम काव्या। Thank you, Chairman, sir. As an elected parliamentarian from Warangal, the erstwhile capital of Kakatiya dynasty, sir, I'm here to request for developing Warangal as a major tourism destination. Warangal has rich cultural and historical heritage sites such as Thousand Pillar Temple, Warangal Fort, Kakatiya Kala Toranam, Ramappa, UNESCO recognized, and then Samakka Saraka Jatara next to Kumbh Mela conducted every alternate year, sir. However, the tourism infrastructure in the city needs significant development. Promoting Warangal as a major tourism destination by improving infrastructure, promoting heritage sites, and boosting tourism services will generate employment and revenue. Enhanced tourism will also contribute to preserving the cultural heritage of this region. Hence, I request the Honorable Minister for Tourism to initiate measures for the comprehensive development of tourism infrastructure in Warangal, Telangana, sir. Thank you. एम डेलकर, श्रीमती कलाबेन एम डेलकर। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह सदन को बताना चाहती हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र दादरा नगर हवेली एक बाहुल्य क्षेत्र है। प्रदेश में पानी एवं रास्ते की समस्या पिछले कई सालों से परेशानी का कारण बन चुकी है। 12,000 करोड़ खर्च करने के बावजूद आज भी वहां की लोगों की मूलभूत समस्या खड़ी है। प्रदेश में पिछले कई सालों से पानी एवं रास्ते की समस्या से लोग बहुत परेशान हैं। सभी ग्रामीण इलाकों के में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। नल में पानी नहीं पहुंचता है। हर घर नल की योजना की जहां बात करूं, योजना की तहत 60% घर में पानी नहीं मिल रहा है और जल शक्ति मंत्रालय ने मेरे प्रदेश को 100% पानी देने की बात कही है, वो गलत है। महोदय, आज भी महिलाओं को कई किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। प्रदेश की जनता को जब तक हर घर नल की योजना की व्यवस्था ना हो, तब तक प्रशासन को पानी की तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। टैंकर या अन्य माध्यम से पानी उपलब्ध कराना चाहिए, वरना इस साल भी पानी की कमी को लोग जूझते रहेंगे। आपकी बात आ गई। साथ में इस तरह से पिछले कई सालों से प्रदेश की आंतरिक सड़कें अत्यंत खराब हो चुकी है। पिछले कई वर्षों से सड़कों को रिपेयरिंग भी नहीं किया गया है। दो विषय मत उठाइए माननीय सदस्य जी। एक विषय 0 आवर में उठता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने पानी की और सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि चलना मुश्किल हो गया है। श्री डीएम कटीर आनंद जी, मन गति से चलना पड़ता है। डीएम कटीर आनंद जी। यस सर। நன்றி ஸ்பீக்கர் அவர்களே, இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை. தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இந்தியாவே உலுக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சனை பற்றி இந்த ஜீரோவில் பேச வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்ன பிரச்சனை என்றால், மன்ரேகா என சொல்லக்கூடிய அந்த 100 நாள் வேலை திட்டத்திற்காக கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெண்களும் காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரை வேர்வை சிந்தி உழைத்து தங்கள் ஊதியத்தை கேட்கிறார்கள், நியாயமான கூலியை கேட்கிறார்கள். ஆனால் அந்த ஊதியத்தை தர மறுக்கிறது இந்த ஒன்றிய அரசு. என்ன தெரியுமா? 91 லட்சம் வேலையாட்கள் வேலை செய்கிறார்கள். 76 லட்சம் பெண்கள் குடும்பங்கள் பயனடைகிறது. அதில் 86 விழுக்காடு SC ST இனத்தை சேர்ந்தவர்கள், 29 விழுக்காடு SC ST இனத்தை சேர்ந்தவர்கள். ஐயா உங்களை கேட்கிறேன், 1 லட்சம் பேர் ஊனமுற்றவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள். ஐயா உங்களை கேட்கிறேன், தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் எங்களுக்கு வர வேண்டிய நிதி கிட்டத்தட்ட 4000 கோடி ரூபாய் பணம் வர வேண்டும். நான் முடிக்கிறேன் ஐயா, நான் முடிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் அவகாசம் கொடுங்க, நான் முடிக்கிறேன். எங்க கஷ்டத்தை சொல்றதா வந்திருக்கோம், நீங்க பேசாதீங்க. ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன். ஆனா 5 மாசம் எங்களுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க. 5 மாசம் கொடுக்கல. இப்போ நாங்க என்ன கேட்கிறோம்? நாங்க உழைச்சிருக்கோம், வேர்வை சிந்தி இருக்கோம், அதுக்காக பணத்தை கொடுங்கன்னு கேட்கறது தப்பா? தமிழ்நாட்டை நீங்க வஞ்சிக்கிறீங்களா? ஆனா இப்ப
அமைச்சர் பதில் சொன்னார். கேள்வி நேரத்தில் பதில் சொன்னார். I am concluding. Same subject. Sir, I am concluding. Ishwara Swami ji on same subject. Ishwara Swami, same subject, same subject. நன்றி பேரவைத் தலைவர் அவர்களே. எங்களுடைய முதலமைச்சர் இதற்காக குரல் எழுப்பியிருக்கிறார். உங்களுக்கு கடிதம் மூலியமாக அனுப்பியிருக்கிறார். இப்பொழுது அமைச்சர் அதை ஏப்ரல் முதல் மாதம் தருகிறேன் என்று கூறுகிறார். இந்த அரசு எதையுமே காப்பாற்றலை. இந்த ஒரு சொல்லையாவது காப்பாற்றும்படி உங்களை மன்னிட்டு கேட்கிறேன். செய்வீர்களா? Swamiji, Shri Ishwara Swamiji, now you can associate. Because I think so he has explained நன்றி and in பேரவைத் தலைவர் detail அவர்களே. he has expressed his feeling நமது about the Manrega. தமிழ்நாட்டில் You can associate with. தமிழ்நாட்டில் வறுமை கோட்டிற்கு விளிம்பு நிலையில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் தான் இந்த 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் பெரும்பான்மையானோர் இந்த வேலைக்கு சென்று வருகின்றனர். நமது தினசரி வாழ்வாதார தேவைகளுக்கு திட்டத்தின் மூலம் வழங்கக்கூடிய ஊதியத்தினை கடந்த 4.5 மாதங்களாக இந்த ஒன்றிய அரசு நிறுத்தி வைத்துள்ளது. ரூபாய் 4034 கோடி ரூபாய் நிலுவையில் இருக்கின்றது. இதனை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசாங்கத்தை தமிழ்நாட்டு மக்களின் சார்பாகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்பாகவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Whatever he has said, I think so you need not to repeat. You must only associate yourself. 1 minute, sir. பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்கும் பொருட்டு மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் Same issue. Same subject. தற்போது மத்திய அரசால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம் 24-25ஆம் ஆண்டு தொழிலாளர் அறிக்கை லேபர் பட்ஜெட்டில் 23-24ஆம் ஆண்டிற்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட மனித சக்தி நாட்களை விட 50% குறைவாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. What is your demand? What's your demand with the government of India? What is your demand? பற்றாக்குறையை மனித சக்தியால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளதால் ஆண்டு முழுவதும் பொதுமக்களுக்கு வேலை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய இயலாத நிலை உள்ளது. எனவே முழுமையான மனித சக்தி நாட்களை கடந்த ஆண்டு பொதுமக்கள் வேலை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். If state will demand, so I think so it is not at any target base. நீங்க பணத்தை கொடுத்தா எதுக்கு நான் கேட்க போறேன்? 4.5 மாசம் நிறுத்தி வச்சிருக்கீங்க. போராட்டம் மக்களுடைய கோரிக்கைகளா இருக்குது. விளிம்பு நிலையில் இருக்கிற மக்களா இருக்காங்க, தாழ்த்தப்பட்ட மக்களா இருக்கிறாங்க. ஆகவே அனைவருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய ஊதியத்தை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும். Thank you. Sir, thank you. I want to mention in this house that protests over the proposed Waqf Bill is spreading all over the country. One Muslim organization, Imrat-e-Sharia, they announced a boycott of the iftar given by Nitish Kumar, Bihar Chief Minister. Sir, I also want to mention that All India Muslim जो यहाँ का सदस्य नहीं है इस सदन का और आप अखबार के माध्यम से अखबार यहाँ रेफरेंस नहीं होता. न्यूज़पेपर इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ द हाउस एंड यू आर ओनली रीडिंग न्यूज़पेपर. छोड़िए ना, कोई न्यूज़पेपर नहीं. यू आर रीडिंग. बोलने दीजिए. डिस्टर्ब हो जाता हूँ. आप बोलने के समय ऐसा करने से क्या होता है? आप बोलिए. तो सर मैं बोलने चाहता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, they have also announced their protest against the proposed Waqf Bill. They have called for demonstration all over the country because the proposed Waqf Bill, with its 428-page report, takes away the right of the Muslims. In the proposed committee, the opposition was bulldozed into accepting the ruling party's views. Still, Waqf Bill has been not brought into the parliament on the floor of the house. On the constitution. So I think so. How and you it can takes just away discuss if the basic rights of people given in the Waqf by acceptance. What is your demand? Because yes, sir. So I strongly still propose that you are the chairman of the Waqf committee. Take away this Professor Saugat Rai, you are a senior member. Anti-Muslim you are meant for to make a piece of legislation in this house. And if regarding any proposed amendment bill, if some protest is going on,
outside the house. I think that being a senior Why member, shouldn't if I you are mention taking a it? cognizance, There is what message will go throughout the country? tremendous Being a senior resentment member of parliament. among the Muslim community about the Waqf Bill, which you bulldozed through the committee. Thank you. Also, sir, Thank you. Shri Yogen Chadaulia ji. Shri Yogen Chadaulia ji. damages. आपकी बात आ गई. The age-old bonds. माननीय सभापति जी, मैं आज दिल्ली के एक महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे दिल्ली के लोगों को बहुत लाभ होगा। उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी हेलीपैड से लेकर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से वे रोड को जोड़ने से दिल्ली में रह रहे बहुत सारे लोगों को इसका लाभ होगा और आवागमन में बहुत आसानी होगी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे दिल्ली के बाहर से जाता है और कुंडली मानेसर व पलवल को आपस में जोड़ता है, परंतु कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से रोहिणी हेलीपैड की कनेक्टिविटी न होने से लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लोगों को बहुत दूर से कुंडली मानेसर पलवल। आपकी डिमांड क्या है? डिमांड मैं वही डिमांड पढ़ रहा हूँ। एक्सप्रेसवे पर चढ़ना पड़ता है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से रोहिणी हेलीपैड तक सीधा रोड, ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाकर कनेक्ट करने से लोगों की समय और ईंधन की बहुत बचत होगी और लोग कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से सीधा रोहिणी दिल्ली पहुंच सकेंगे तथा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने में भी आसानी होगी, आवागमन आसान होगा और लोगों को सुविधा होगी। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से रोहिणी हेलीपैड हेतु सीधा रोड या एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर बनाकर कनेक्ट किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बाबू सिंह कुशवाहा। माननीय सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की जीवनदायिनी गोमती नदी की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गोमती नदी जो पीलीभीत जिले से के माधव टाना से निकलकर लगभग 960 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गंगा नदी से मिलती है, आज प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। यह नदी केवल जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों की जीवन रेखा ही नहीं, बल्कि इसके किनारे बसे सैकड़ों गांवों की कृषि और जल पूर्ति का मुख्य स्रोत भी है। प्रदूषण की विकराल समस्या है। गोमती नदी में औद्योगिक कचरे, घरेलू मल जल और कृषि रसायनों की अनियंत्रित प्रवाह हो रहा है, जिससे नदी की जल गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे प्रमुख शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीटीपी की उचित व्यवस्था न होने के कारण बिना उपचारित गंदा पानी नदी में प्रवाहित हो रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार गोमती नदी का जल क्लास डी की श्रेणी में आ गया है, जो पेयजल तो दूर सिंचाई के उपयुक्त भी नहीं है। माननीय सभापति जी, गोमती नदी के किनारों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे नदी की प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। विशेषकर जौनपुर, लखनऊ के आसपास गोमती नदी की भूमि पर अवैध कब्जा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे नदी का स्वरूप नष्ट हो रहा है और बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। जल स्तर में गिरावट आ रही है। नदी के उद्गम क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई, जल स्रोतों का अतिक्रमण होने से गोमती नदी का जल स्तर लगातार घट रहा है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा की एक रिपोर्ट के अनुसार गोमती नदी रिजॉर्ट ऑक्सीजन डीओ का स्तर 2-3 मिलीग्राम प्रति लीटर तक गिर गया है, जो मछलियों और जलीय जीवों के जीवन के लिए भी घातक है। माननीय सभापति जी, गोमती नदी के पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू में की गई क्या मांग है? आपकी मांग क्या है? माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से बहुत लोग हैं कि गोमती नदी की सफाई और पुनर्जीवन के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए। श्री नरेश चंद्र उत्तम जी, 1 मिनट सर, आ गई ना कि प्लांट नदी की सफाई क्षमता संचालित किया जाए, नए एसटीपी स्थापित किया जाए, अतिक्रमण हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, गोमती नदी के किनारों पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए, जिससे भूजल
वेरी सीनियर मिनिस्टर्स आर सिटिंग। माननीय राजनाथ जी मौजूद हैं, संसदीय माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षित युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मानवर फतेहपुर जिले में हजारों की संख्या में ऐसे युवा हैं जिन्होंने बीएड और बीटीसी जैसी उच्च शिक्षण डिग्रियां प्राप्त की हैं, लेकिन वे वर्षों से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। वे योग्य और प्रशिक्षित होने के बावजूद सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने में वंचित है। यह स्थिति न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, बल्कि हमारे शिक्षा तंत्र को भी कमजोर कर रही है। मानवर नए शिक्षकों की भर्ती में तेजी लाई जाए। मानवर बीएड और बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके। मानवर रिक्त पदों की पहचान कर जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाए। मानवर नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी भेदभाव के रोजगार मिल सके। संविदा भर्ती के जगह स्थायी नियुक्तियों की प्राथमिकता दी जाए। मानवर इस मुद्दे पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो ये न केवल बेरोजगार। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना पे बात करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार के 2024 और 25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 8.5 लाख आवास के अनुरूप 5.5 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें अभी तक 2024 दिसंबर तक मात्र 6 आवास प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास 18 लाख जो मोदी जी की गारंटी थी, उसको विधानसभा चुनाव में इन्हें प्रमुखता से लिया गया था। और ये यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, उसको कितनी गंभीरता से लेती है, ये आपके संज्ञान में, आपके द्वारा प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ। हमेशा ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस सरकार क्या करती रही पिछले में, लेकिन हमारी जब पिछले 5 साल पहले, अभी 1.5 साल पहले जो हमारी सरकार थी, सर एक मिनट सुनिए तो, सर गंभीरता से सुनिए, सर मैं आंकड़े देना चाहती हूँ, सर मैं आंकड़े देना चाहती हूँ, सर मेरे आंकड़े तो सुनिए आप, सर मेरे आंकड़े सुनिए। देखिए प्रधानमंत्री आवास, सर प्लीज एक मिनट तो दीजिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार जब थी, तब हमारी सरकार ने 2019-20 में जो मात्र जो 1,51,000 की जो स्वीकृति थी, उसमें से 1,36,000 की स्वीकृति दी थी। 2020-22 में भी इसी प्रकार 1,25,000 की दी थी। इस तरह से हमारे यहाँ सभी लोगों, सभी हितग्राहियों को मिला, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ सिर्फ 6 बने हैं, तो आप इसको गंभीरता से लीजिए। हम चाहते हैं कि सभी हितग्राहियों को जो हमारे प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको पूर्ण लाभ मिले। सर आप पूरी बात मेरी सुनते ही नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। आ गई आपकी बात। श्री प्रदीप पुरोहित जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं उड़ीसा से बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र, जो मेरा क्षेत्र है, 2 जिला बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिला लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र कोई इंडस्ट्री नहीं था, 0 इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, 2014 में जब प्रथम पहले बार देश के प्रधानमंत्री रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दायित्व लिए और उड़ीसा के सुपुत्र धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम विभाग के मंत्री बने, तब बरगढ़ जिला, जहां कोई इंडस्ट्री नहीं था, वहां एक इथेनॉल प्रोजेक्ट का शुरुआत किया 1,557 करोड़ में। लेकिन दुख की बात यह है, उड़ीसा में जब बीजू जनता दल का सरकार चल रहा था, ये प्रोजेक्ट को बाधक देना शुरू किया, लेट किया। लेकिन अभी उड़ीसा में डबल इंजन का सरकार बना है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार उड़ीसा में और दिल्ली में। मैं केंद्र सरकार के नजदीक ये मांग करना चाहता हूं कि इथेनॉल प्रोजेक्ट जो वहां जो परियोजना चल रहा है, वहां लोकल बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। लोकल काफी यूथ है जिन लोग में अनएम्प्लॉयड है, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए और कोई रिश्वत लेके किसी को वहां चाकरी नहीं देना चाहिए। ये मेरा डिमांड है और जल्दी से जल्दी उस परियोजना को खत्म करना चाहिए। मैडम सयानी घोष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। There has been a growing discussion about increasing work hours, which suggested 70 and even 90% of work per week. While some argue that longer hours lead to higher productivity, it also raises serious concerns
about workers' rights, their mental and physical health, and overall well-being. Sir, Economic Survey 24-25 बोलता है that working more than 55 to 60 hours a week leads to increased health risk, and WHO and ILS study shows that हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करने से 35% of higher risk of stroke with 17% of risk of death due to ischemic heart disease. सर, ये सरकार कंपनीज का साथ दे रही है लेकिन कर्मचारियों का नहीं। आलोचना इस पे नहीं हो रही है कि कैसे कर्मचारी को अपना हक दिलाया जाए, पर इसमें हो रहा है कि कैसे उनका बोझ बढ़ाया जाए। तो सर, न्यू लेबर कोड्स कवर एस्पेक्ट्स लाइक कवरिंग वेजेस, ensuring social security, occupational safety, and etc. But there is no implementation, actual implementation on the ground. So आपके माध्यम से मेरी बस यही मांग रहेगी that labor codes को पूरे मात्रा में ग्राउंड में लागू किया जाए, excessive and grueling work hours पे लिमिट लगाया जाए, और 6 आदमी से हफ्ते में 60 घंटे काम ना करवा के अगर 10 आदमी से 6 घंटे काम करवाए तो नौकरी बढ़े, रोजगार बढ़े और कर्मचारियों का वर्क एफिशिएंसी भी बढ़े। थैंक यू सर। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 5 वर्षों में 419 सफाई कर्मियों की मौत सीवर और सेप्टिक टैंकों में हो चुकी है। 16 मार्च 2025 को दिल्ली जल बोर्ड ने नई फ्रेंड्स कॉलोनी में 3 व्यक्तियों को मेन हॉल में उतरने के लिए मजबूर किया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 2 अस्पताल में जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं। यह हाल देश की राजधानी दिल्ली में है। देश की संसद से ही कुछ किलोमीटर दूर लोग गटर में मारे जा रहे हैं और सरकार विकसित भारत के बैनर लगा रही है। आपकी मांग क्या है? पैसे खर्च कर रही है। महोदय, तुरंत इन मौतों को रोकने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। संसद में सरकार को जवाब देना चाहिए। देश में बुनियादी ढांचे, विज्ञान और तकनीक का इतना तीव्र विकास होने के बावजूद अभी भी देश के कई राज्यों में शुष्क शौचालय प्रणाली मौजूद है और महिलाओं को माथे पर। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे जलगांव लोकसभा क्षेत्र में मंत्रालय ने जलगांव आरएमएस कार्यालय के पंजीकरण विभाग को भूसावल स्पीड पोस्ट हब में विलय करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय जलगांव के लोगों को आरएमएस कार्यालय के अनावश्यक और अन्यायपूर्वक है। जलगांव जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ सभी प्रमुख दफ्तर या सरकारी दफ्तर और संस्था स्थित है, जैसे जिला कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम, मेडिकल कॉलेज और अन्य सरकारी कार्यालय है। आप एसोसिएट कर ले, आप भी अपने को एसोसिएट कर ले, है जो मेल और पत्राचार की डिलीवरी करता है। यदि जलगांव में स्पीड पोस्ट हब स्थापित किया जाता है तो मेल की डिलीवरी होने वाली देरी को रोका जा सकता है। वर्तमान में भूसावल हब में 24 से 48 घंटे तक होती है। डिमांड क्या है? वही बोल रहे, 2 मिनट 1 मिनट तो दीजिए साहब। 1 मिनट। यदि जलगांव में आया तो आईसीएच हब स्थापित किया जाए तो यहाँ अतिरिक्त 4000 से 4500 स्पीड पोस्ट पत्र का संचालन किया जा सकेगा, जिसमें समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा जलगांव में जिला पूरे क्षेत्र में केंद्रीय स्थान पर स्थित है और यहाँ जो सड़क, रेल है, हवाई अड्डा मार्ग अच्छी तरह से कनेक्टिविटी है, जो मेल की डिलीवरी की और सुलभ कर सकता है। धन्यवाद। श्री कामाख्या प्रसाद जी तासा। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं काजीरंगा से आता हूँ सांसद बन के। इससे पहले मैं जोरहाट का भी सांसद था। मेरा जोरहाट में एक एयरपोर्ट है जो काजीरंगा से बहुत नजदीक है और काजीरंगा में बहुत सारे टूरिस्ट और स्टूडेंट्स भी जाते हैं और जोरहाट से भी बहुत सारा स्टूडेंट्स और पेशेंट इंडिया का बाहर भी जाते हैं, इंडिया के बहुत स्टेट्स में जाते हैं। लेकिन सर वहां पर एक ही फ्लाइट है जो इंडिगो चलाती है। मेरा डिमांड है, मैं मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट किया और एक फ्लाइट चलाया जाए जो दिल्ली, कलकत्ता, जोरहाट चले। अभी जो फ्लाइट चलता है सर वो कलकत्ता में बहुत टाइम लेआउट है, जिसके लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्या एक डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से जोरहाट के लिए दिया जाए, जो जोरहाट से भी दिल्ली के लिए आएगा। 2 फ्लाइट दिन में होने से अच्छा है। चेयरमैन सर, मैं आपके थ्रू ऑनरेबल मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करता हूँ क्या इसका फ्लाइट एक ग्रांट किया जाए और सबको बेनिफिट दिया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। पहले श्री जूने मलाई, श्रीमती जूने मलाई। सर, जून मालिया है सर। थैंक यू सर। रिक्वेस्ट है कि आप 2 मिनट देंगे मुझे आज, प्लीज। Sir, on behalf of the film fraternity, I rise today to bring the attention of this House the government's ongoing consultation on the regulation of the over-the-top OTT platforms. With the rapid expansion of digital content consumption,
OTT platforms have become a crucial part of our media and entertainment ecosystem, offering diverse content to millions of viewers. However, recent discussions on potential regulations raise concerns regarding freedom of expression, creative independence, and ease of doing business in the digital sector. While it is important to ensure responsible content dissemination and safeguard users from harmful material, especially our children and young adults, however, excessive regulation may stifle innovation and restrict consumer choice. Sir, through you, I urge the government to provide clarity on the objectives of this consultation, ensure a balanced approach that safeguards creative freedom while addressing legitimate concerns, and engage with all stakeholders, including content creators, digital platforms, and consumer rights groups, before finalizing any regulatory framework. This matter requires urgent attention to ensure that any policy decision does not hamper India's thriving digital economy and aligns with global best practices. Thank you, sir. थैंक यू सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कोकराझार असम, जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में आता है तथा ये इलाका भारत भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। इस पूरे इलाके में भारतीय मोबाइल नेटवर्क की स्थिति बहुत खराब है। इस पूरे इलाके कोकराझार, बाक्सा, तामुलपुर, चिरांग और उदालगुरी जिला में आते हैं। इस पूरे इलाके में मोबाइल सर्विस की हालत इतनी खराब है कि खाल दर 80% तक है। मेरे संसदीय क्षेत्र और इस पूरे इलाके तथा सीमांतवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकारी तथा प्राइवेट कंपनियों के मोबाइल टावरों की आवश्यकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी तथा इन सीमांतवर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस इलाके में सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के सभी कैंप्स में भी यही समस्या है, जहां एक दो कैंप्स को छोड़कर किसी में भी भारतीय मोबाइल नेटवर्क का काम नहीं करता। मेरे सरकार से अनुरोध है कि इस विषय में तुरंत ध्यान दे और क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाए जाए। थैंक यू मैडम। माननीय सदस्य श्री हाई बी हिडन जी। Sir, Madam, I would like to draw the attention of the House to a matter of a great concern. The judiciary is the most important pillar of our democracy. A common person's last resort for justice is our judicial system. So it is very important that a judiciary is free from corruption. Ma'am, it is said as Caesar's wife must be above suspicion. The entire country is shocked by the alleged discovery of large sums of unaccounted cash at the residence of a sitting Delhi High Court judge. The same has been widely reported in media also, and now the Supreme Court has constituted an in-house probe to look into the incident. The incident is extremely disheartening and clearly tarnished the faith of common people of our country in the judicial system. Accordingly, it is imperative that the House discuss the issue in detail and find a robust and cogent solution to ensure greater judicial accountability and transparency in our country and ensure that such incidents doesn't happen in the future, ma'am. Thank you. प्रिया सरोज जी, ऐसे करिए, नाम भेज दीजिए प्लीज। माननीय प्रिया सरोज जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय सदस्य भी शून्यकाल चल रहा है, प्लीज आप बैठिए। आप माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान मछली संसदीय क्षेत्र के पिंडरा विधानसभा की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी, जो जनपद वाराणसी के पिंडरा तहसील के 10 गांव में काशी द्वार नाम की टाउनशिप बनाने की योजना थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा योजना बनाई गई थी, लेकिन इस फैसले का स्थानीय किसानों ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया कि काशी द्वार योजना
फिलहाल स्थगित कर दी जाएगी। हालांकि किसानों की जमीन के रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर रोक अभी भी लगी हुई है। इस वजह से किसान ना तो अपनी जमीन पर बेच पा रहे हैं, ना ही उस पर कोई निर्माण कार्य कर पा रहे हैं। पिंडरा वाराणसी क्षेत्र में आता है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहीं से चुनकर आते हैं। मेरे पिंडरा क्षेत्र के किसान अपनी जरूरतों पूरा करने के लिए आय के लिए अपनी जमीन पर निर्भर है। वह जमीन का छोटा टुकड़ा बेचकर बेटियों की शादी, घर बनाना या अन्य आवश्यक खर्च का इंतजाम करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से इस जमीन का खरीद और बिक्री पर रोक लगी हुई है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी 300 एकड़ जमीन कल्चरल सेंटर के लिए, 350 एकड़ एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए और 50 एकड़ सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए ली जा चुकी है। अब जो जमीन बची हुई है, किसान उसी पर खेती कर जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं। आवास व शहरी विकास मंत्रालय से मेरी मांग है कि काशी द्वार योजना को पूरी तरह से रद्द किया जाए या इसे कहीं और बनाया जाए। किसान की जमीनी की रजिस्ट्री और निवारक कार्य पर जो रोक लगी हुई है, उस रोक को थँक यू चेअरमॅन मॅम. नर्मदा जल न्यायाधिकरणाच्या अवॉर्ड अनुसार 1997 ला 98 ला मध्य भारतीय मान्य सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सरदार सरोवर धरणाचे सुमारे 10.89 टीएमसी पाणी महाराष्ट्र राज्याला वाटप करण्याचा आदेश होता। त्यातील फार जुने तापी नदीवरील सोनगड डॅमचे 5 टीएमसी पाणी नंदुरबार जिल्ह्यात काही गावांना द्यायचा करार दोन्ही राज्यात झालेला होता, परंतु त्या अंमलबजावणी झाली नाही। त्यामुळे मी केंद्र सरकारला विनंती करतो की 10.89 टीएमसी पैकी 5.89 टीएमसी पाणी मात्र अक्राणी व अक्कलकुवा तहसील जे माझ्या नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये यांना फक्त मिळावी। याची कारण अशी की या दोन्ही तालुक्यातील गावे सरदार सरोवर प्रकल्पामध्ये बाधित झालेले आहे आणि अक्राणी तालुक्यात तापी जोड प्रकल्प करून परत या भागातील काही गावांचे विस्थापन या तेथील जनतेला मान्य नाही। तसेच म्हणणे असे आहे की आम्ही पण माणसे आहोत, आम्हालाही जगायचं आहे, म्हणून उर्वरित 5.89 टीएमसी पाणी या दोघी तालुक्यांना मायनर इरिगेशन प्रोजेक्टसाठी देण्यात यावे ही विनंती करतो। नाही झालं तर गुजरातचे नाही तर महाराष्ट्र संबंधित अधिकारी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी। केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यात नर्मदा नदीच्या पाण्यातून जलसंधारण प्रकल्प सुरू करावेत ही मी केंद्र सरकारला विनंती करतो। धन्यवाद। प्रसाद जी, माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती, वहां के किसानों को उजाड़ा गया है बड़े पैमाने पर, और हमारे पास अभी परसों बहुत काफी संख्या में किसान आए थे जमथरा माझा, जिससे 2000 किसान पूरी तरह से अपने खेतों पर जोतने के लिए, बोने के लिए, कब्जा करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से रोके जा रहे हैं। और यही नहीं, माझा बरहटा में बहुत बड़े पैमाने पर राम पथ बनाने में, एरोड्रम बनाने में अयोध्या जनपद की तमाम जमीन ले ली गई और वहां पर मुआवजा भी नहीं दिया गया। मुआवजा के लिए जो मुनासिब होता है सर्कल रेट, ये उत्तर प्रदेश का अयोध्या ऐसा जनपद रहा है जहां पर 7 साल से सर्किल रेट का निर्धारण नहीं हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ हमारे किसानों की जमीन जो कौड़ियों के दाम पर ले ली गई और करोड़ों के दाम पर बाहरी लोगों को बेचने का काम किया गया। ये सिलसिला मानवर तेजी से चल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पर ली गई है, करोड़ों ली गई है, उनको मुआवजा दिया जाए और माननीय सदस्य श्रीमती शताब्दी राय जी। थैंक यू मैडम। मैं सेंट्रल स्कूल के बारे में बात करना चाहती हूँ। सेंट्रल स्कूल का बहुत सारे कंप्लेन आते हैं जिसमें बोलो क्या, हाँ, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, टीचर्स है नहीं। मेरा बीरभूम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सेंट्रल स्कूल है उसमें परमानेंट टीचर सिर्फ एक है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल। तो वो टीचर भी आते कि नहीं, पढ़ाते कि नहीं, ये मॉनिटरिंग करना चाहिए।
और सेंट्रल स्कूल में जो हम लोग का कोटा था एमपीज का 10 करके एक साल में, तो वो अगर पूरे फिर से लाए तो हम लोग का एटलीस्ट 5 साल में 50 बच्चे का हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ये एमपीज के लिए वापस लाना बहुत जरूरी है। और मैडम, ये जो सेंट्रल स्कूल में मिड डे मील जैसा होता है, मिड डे मील के लिए बच्चे आते हैं, वो ही काफी नहीं है। मिड डे मील के बिना भी पढ़ाई भी काफी होना चाहिए। और ये सेंट्रल स्कूल हिंदी मीडियम है, लेकिन मैं बोलूंगी मातृभाषा के लिए बांग्ला में भी सपोर्ट देना है, क्योंकि ऐसे भी इस जनरेशन अपना लैंग्वेज ना जानते ना ठीक से बोल पाते। अगर वो स्कूल में एनकरेज नहीं होगा तो उसका हाल और भी खराब होगा। मैडम, टाइम तो 1 मिनट। धन्यवाद महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत बाबा सिंहेश्वर धाम स्थान के बीच NH 106 बीरपुर से बीरपुर जाती है। उस सड़क पर हमेशा भारी यातायात एवं जाम की समस्या बनी रहती है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। अतः माननीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री जी से आग्रह है कि सिंहेश्वर स्थान NH 106 के साथ बाईपास सड़क का निर्माण किया जाए, जो जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री इकरा चौधरी जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं अपने क्षेत्र के सहारनपुर जनपद की एक किसान सरदार वेद प्रकाश जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रशासन की लापरवाही से तंग आकर आत्मदाह कर लिया। उनकी जमीन का विवाद 1 दशक से लटका था। जब उस किसान की कहीं सुनवाई नहीं हुई और प्रशासन उनकी जमीन कुर्क करने पहुंचा तो उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। इसी तरीके से कई जगह पर ग्राम कलसी में किसान धरने पर है। वहां सरकार ने उनकी जमीन तो हाईवे के निर्माण के लिए ले ली, लेकिन उन्हें श्रेणी के जाल में उलझाकर मुआवजे से वंचित कर दिया। शामली में NHI ने किसानों की जमीन ले ली, मगर मुआवजा देने में सरकार ने इतने पेच लगा दिए कि आज उन्हें बाजार की दर से भी कम मुआवजा मिल रहा है। ग्राम भाजू के करीब कट का वादा सरकार ने किया और सरकार के अधिकारियों ने किया, लेकिन उसे भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। जनपद शामली में चीनी मिलों के पास कम से कम 30 करोड़ का बकाया है और थाना भवन के मिल पर जो किसान धरना दे रहे हैं उन्हें उनका मूल्य देने की बजाय उन पर मुकदमा दायर कर दिया गया है। लगभग 26 किसानों पर मुकदमा दायर कर दिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मसार है। मैं सिर्फ एक सुझाव आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। डॉक्टर संजय जायसवाल जी। मैं आपके माध्यम से 0 आवर में रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का मामला को उठाना चाहता हूं। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। दोनों के सारे परिवहन से विदेश से बिजनेस करने के लिए हमारा जो पोर्ट है वो बंगाल में हल्दिया का है। हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे के लिए बिहार सरकार ने और झारखंड सरकार ने NOC अलाइनमेंट दे दिया है, फाइनल कर रहा है। मैं अपने माननीय TMC के भी मित्रों से कहना चाहूंगा कि ये बंगाल का अलाइनमेंट तुरंत फाइनल कराया जाए, क्योंकि ये हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे बनने से न केवल बिहार के सामानों को निर्यात में फायदा होगा, बल्कि नेपाल में भी जो सामान आते हैं उनका भी तेजी से हो सकेगा, जिससे कि नेपाल को भी मदद मिलेगी और बिहार सरकार को भी मदद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री के सुरेश जी। Chairperson, Madam, I wish to bring to the urgent attention of the House the severe crisis faced by paddy farmers in Kuttanad and Upper Kuttanad, covering Alappuzha, Kottayam and Pathanamthitta districts. Due to serious lapses in the procurement process, the delay in procurement and inefficiency in payment disbursement have placed thousands of farmers in deep financial distress. One of the major concerns is the delayed procurement by rice mills, which has led to the situation where farmers are unable to sell their produce at the right time. As a result, they are either forced to hold onto their stock without proper storage facilities to sell at lower prices to private buyers, leading to losses. Despite repeated assurance, the procurement process remains sluggish and unorganized. The inefficiency of the state government and the departments, particularly agriculture and civil supplies department, has further aggravated the crisis. The absence of the well-coordinated procurement
mechanism has resulted in large-scale mismanagement causing unnecessary hardship for the farmers. Lack of the proper planning and accountability has severely impacted the timely collection and storage of harvest paddy. Thank you. माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। माननीय सदस्य श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। इसके बाद कोई अगला ले लीजिए, बाद में चलिए। माननीय सदस्य सुश्री वर्षा गायकवाड़ जी। सन्माननीय अध्यक्ष महोदया, मी मुंबईतले कोळीवाडे आणि गावठाण याच्या संदर्भामधला महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी मांडू इच्छिते आणि केंद्र सरकारचं या माध्यमातून लक्ष जे आहे ते वेधू इच्छिते। मुंबईत राहणारे जे कोळी आणि आगरी बांधव आहेत ते मुंबईचे आद्य नागरिक आहेत, पहिले नागरिक आहेत सन्माननीय अध्यक्ष महोदया, आणि जवळपास 400 वर्ष ते मुंबईमध्ये स्थायिक आहेत। त्यांचा पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय आणि त्यांची घरं त्या ठिकाणी आहेत आणि पारंपरिक वस्तीच्या असलेल्या या घरांना शहरी नियोजनामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महोदया जे आहे ते शहरी गाव असं म्हणतात। मला या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा हा मांडायचा आहे की मुंबईमध्ये 189 गावठाणे आणि 36 कोळीवाडे आहेत, पण दुर्दैवाने जो मुंबईचा विकास आराखडा झालेला आहे त्याच्यामध्ये फक्त 52 गावठाणे आणि 22 कोळीवाडे जे आहेत त्याच्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत। आणि प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे काय झालंय, त्या ठिकाणी जे आहे ते कोळीवाडे जे आहेत आणि गावठाण आहेत त्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या अंतर्गत जे आहे त्याचा सर्वे चालू आहे। यालाच आमचा महत्त्वाचा जो आहे तो विरोध आहे। भूमिपुत्रांना आणि तिथल्या असलेल्या आद्य नागरिकांना जे आहे त्यांचे पारंपरिक हक्क जे आहे ते मिळाले पाहिजेत आणि म्हणून या शून्य प्रहराच्या माध्यमातून मी मागणी करू इच्छिते की मुंबईतले सर्व कोळीवाडे आणि गावठाणे यांची तातडीने मॅपिंग करावं, त्यांचं सीमांकन करावं आणि जो मुंबईचा विकास आराखडा तयार झाला आहे त्याच्यामध्ये त्यांना त्या ठिकाणी समाविष्ट करावं, जेणेकरून त्यांना कायदेशीर त्या ठिकाणी संरक्षण मिळेल आणि कोळीवाडे आणि गावठाण जे मुंबईचे आहेत त्यांना झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याची जी प्रक्रिया चालू आहे तिला तात्काळ रद्द करावं। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्री बी मेहताब जी। धन्यवाद महोदया। There is no export house in Odisha for export of handicraft items. Most of the handicrafts item of Odisha are procured by export houses located outside Odisha and exported to foreign countries. Further, handicrafts of Odisha exported from Visakhapatnam and Kolkata ports are not accounted for against state of Odisha. As a result, export of handicrafts items from Odisha is reported very low, even though actual export is very high. The Odisha chapter of FIEO, an organization under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, may be strengthened by opening an earmarked cell to focus on export of handicrafts from Odisha. I urge the Union government to consider this proposal positively. Thank you. माननीय सदस्य श्री सुरेश गोपीनाथ महात्रे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मी आज आपणाला माझ्या भिवंडी लोकसभा क्षेत्रातील भिवंडी शहर आणि भिवंडी ग्रामीण या भागाची वीज वितरण कंपनी आहे टोरंटो, या कंपनीविषयी मी आपल्यासमोर माझं मत मांडतोय। अध्यक्ष महोदया, 2007 सालापासून जेव्हा ही कंपनी भिवंडी शहर आणि ग्रामीण भागात आली तेव्हापासून तर आतापर्यंत 18 वर्षात साधारणतः 20 ते 25 मोर्चे या कंपनीच्या विरोधात हजारो लोकांचे मोर्चे हे निघालेले आहेत। खास करून भिवंडी कापड व्यवसायामध्ये या देशामध्ये एक नामांकन असं महत्व होतं, परंतु आज तो व्यवसाय देखील डब घायला आलेला आहे। हजारो लोकांचा रोजगार हा बुडालेला आहे। अध्यक्ष महोदय, ही वीज वितरण कंपनी मनमानीप्रमाणे लोकांच्या घरात घुसून जी फाईन करायची फाईन करतोय। दुसरी गोष्ट, कोणी ग्राहक तक्रारीला गेला की 2000चं बिल जर 25,000 आलेलं आहे तर त्याची तक्रार न घेता त्याला पहिल्यांदा बिल भरायला सांगतात आणि बिल भरल्यानंतर तुमची तक्रार बघू, आणि तसं जर केलं नाही तर पोलीस केस केली जातो, अटक केली जातो आणि न्यायालयात देखील, मॅडम मी खूप जबाबदारीने बोलतो खासदार नेत्याने, की न्यायालयात न्यायाधीश देखील पहिल्यांदा बिल भरायला सांगतात आणि नंतर त्याची चौकशी करू अशा प्रकारचा स्पष्ट आदेश देतात आणि जोपर्यंत बिल भरत नाही
तोपर्यंत त्या माननीय व्यक्तीला सदस्य श्री जामीन विनोद होत कुमार नाही. बिंदजी. आणि अध्यक्ष महोदय, याविषयी मी खट्टर साहेबांकडे देखील तक्रार केलेली आहे. याची माननीय आपण सदस्य चौकशी श्री करावी विनोद कुमार अशी मी बिंद. आपल्याला नम्र विनंती करतोय. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री रिकी एड्यू सिक्कौन जी. Madam Chairperson, through you, I would like to draw the attention of this vexed and pertinent issue concerning Northeastern Hill University, one of the only central university in Northeast at one point of time. Today, Madam, this university, which with a motto to rise up and build. Today, Madam, when we look at the condition of this university, it is in total disarray. And the reason for this is because of the leadership crisis that the university is facing. Madam, the incompetency of the present VC has led to protests by students, teachers, and non-teaching staff of this university, and has brought this university to a standstill. For the last couple of months, this university has been greatly affected in terms of teaching and research, which is the prime objective of any learning institution. Therefore, Madam, through you, I would like to urge upon the concerned ministry to take up this matter seriously by removing this VC who is सभापति महोदया, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो पूरे देश के लगभग 26 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अंतर्गत आज वो रूरल बैंक्स काम कर रही हैं, जो पूरे देश के ग्रामीण किसानों के, नौजवानों के या विद्यार्थियों के, उनकी सेवा करने का काम सबसे ज़्यादा, और 22,000 शाखाएं हैं इनकी। कम से कम 40 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो रिमोट एरिया में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इनका कोई एक अपेक्स बॉडी नहीं बनी है कहीं, जबकि भारत सरकार का 50% लगा है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आज पूरे देश की जो ग्रामीण बैंक हैं, उसको एक केंद्रीय स्तर पे पूरे 40 करोड़ की सुविधाओं के एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक NRBI की स्थापना की जाए, और उसमें भर्ती प्रक्रिया पूरे नेशनल लेवल पे एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक रूपता हो, और जो उसमें टेम्परेरी 20,000 स्टाफ काम कर रहे हैं ये ग्रामीण बैंकों में देश के विभिन्न राज्यों में, 26 राज्यों में, उनको अस्थायी किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार बिंद जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बल्ले शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र में बरौत हाईवे से बिठौली बसवापुर चौराहा होते हुए भटेरवा सूर्यावा कलिंजा मार्ग तक की लंबाई 30 किलोमीटर की है। जो रोड की स्थिति अत्यंत दयनीय है। दयनीय होने के साथ साथ रोड की चौड़ाई भी कम है, जिससे आए दिन जो है दुर्घटनाएं होती रहती है और लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, जिससे बच्चों को विद्यालय जाने के लिए और जो इमरजेंसी पड़ती है तो लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत दिक्कतें होती है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि जो चौराहे बिठौली और बसवापुर चौराहे होते हुए सूर्यावा कलिंजा मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाए और उसके साथ साथ जो है रोड की मरम्मत कराई जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती श्री ईशा खान चौधरी जी। ईशा खान चौधरी। Madam, I'd like to bring your attention to the problem caused by a lack of employment opportunities in Malda and Murshidabad districts of West Bengal, where tens of thousands of laborers are forced to migrate from my constituency of Malda Dakshin each year to other states in search of livelihood and jobs. The situation is aggravated because of the 100 days Manrega scheme is suspended in Bengal. Tragically, many of these poor migrant workers face dire working circumstances, and many hundreds of laborers lose their lives each year in workplace accidents during building, construction, and electric tower projects across the nation. As contract laborers, they face poor, unsafe working conditions, inadequate living conditions, and no medical support or coverage when they are sick, injured, and their families often receive no compensation if they die in a workplace accident. Given the recurrent nature of such incidents, I strongly urge the central government to take the lead
in cooperation with states to implement a comprehensive financial and legal welfare scheme. I would particularly like to suggest a universal and national life and health insurance scheme for such poverty-stricken migrant workers and their families. Thank you, Madam. माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। Thank you very much, Madam Chairman. I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Fisheries to the critical issue of ongoing illegal fishing practices in the territorial waters of Kerala. The Government of India has prohibited harmful fishing methods such as bull or pair trolling and the use of artificial lights or LED lights for fishing in Indian waters in our exclusive economic zone, EEZ. But these practices are continuing in Kerala's waters. Outsiders are conducting exploitative large-scale fishing, which ultimately endangers marine resources through rapid fish resource depletion and threatens the livelihoods of our small and traditional fisherfolk. Additionally, the traditional fishermen have faced assaults by bull trawlers and fishers using LED lights, further highlighting the urgent need to protect their livelihoods. These practices also go against India's blue economy policy framework, the Maritime India Vision 2030, and the United Nations Sustainable Development Goals. I therefore urge the Honourable Minister to enforce the prohibition on and effectively curb bull trawling and the use of artificial lights or LED lights by involving the Coast Guard and the Indian Navy in this matter and strengthening coordination between them. Thank you very much, Madam Chair. माननीय सदस्यों, जिन माननीय सदस्यों के पिछले दिनों की सूची में नाम बचे हैं, उनको कल मौका दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 15 वित्त विधेयक 2025, माननीय सुश्री ज्योतिमणि जी। Honorable Chairperson, thank you for the opportunity to speak on the Finance Bill 2025. Budget or a finance bill is not just about numbers. It reflects the government's priorities, ideology, and intent. This finance will make it very clear that this government is for rich, not for the common people. It works for the corporate, not for the farmers. It protects its own electoral interests, not the economic interests of the country. I am sorry to say this, it's a betrayal of 143 crore Indians. The Honorable Finance Minister announced income tax rebate to individuals earning up to 12 lakhs. I have no problem with it. But you are projecting that as it benefits the entire middle class. It actually benefits only 1 crore people, while Indian middle class comprises of 40 to 50 crore people. If you are Additionally, if you cut excise duty on petrol and diesel, it would have actually benefited the entire middle class and lower middle class. Under the UPA regime, excise duty revenue is 90,000 crore. But in the Amritkal government, excise duty is on petrol diesel around 3 lakh crore. It's a 250% increase on the diesel. Sorry, 250 crore increase on the petrol and 800% increase on the diesel. Where does this money go? It benefits the corporate most, not the middle class. Honorable Chairperson, the Modi government has gifted 26 lakh crore to corporate on a silver platter. The income tax and the GST collection is more than the corporate tax collection. Moreover, 50% of the GST comes from the 50% of poorest population of this country. This corporate sector pays only to 10 to 12% of the tax. But are these corporate providing adequate employment? See the unemployment rate. It has reached a crisis level. India's unemployment rate is at 8%, the worst in 50 years. Youth unemployment is at 45.4% in 2022-23. Practically every second young person in this country is jobless. Female unemployment in urban areas remain 8.4%. Unemployment among Muslims is at 9.2%. Instead of stable employment, youth forced to take into gig work and low-paying jobs. Job security is dead. Salaries are stagnant. The youth of India are being exploited. They voted for hope. What did they get in return? Betrayal, frustration, and hopelessness. Honorable Chairperson, MSME have provided employment to around 12 crore people. Now it's completely neglected. 3 crore MSMEs have been shut during demonetization and the mismanagement of GST. I represent the constituency Karur, which is the 4th largest exporter of textiles in the country. It pains me to see that all the
Companies have slowly shut down and thousands of people losing employment. The number of workers in the informal sector declined by 1.3 crore. Manufacturing employment reduced by 81 lakhs. As a result, manufacturing sector contribution to overall GDP has come down to 12 to 12.5%, when it is 15 to 60% in UPA government. The government is boast about Atmanirbhar Bharat, but its import in China has increased to whopping 83%. This is Make in India or Made in China. Honorable Chairman, Madam, I would like to understand what kind of tax structure is this. It is blatantly robbed the poor, farmers, common people and manufacturer, but outrightly benefits the corporate. The government posts about agriculture growth, but reality tells a different story. Over 55% of farmers drowning in debt, with an average burden of 91,231 rupees. Over 1 lakh farmers committed suicide since you assume office in 2014 up to 2022. After this no data, government has not sent any data out. Now, in the last 10 years, this government has given 26 lakh crore to the corporates in the form of bad loan waiver and corporate tax cut. Who's feeding this nation? Farmers or corporates? The government promised to double the farmers' income by 2022 and promised the legal guarantee to MSP. But now it's a forgotten promise because farmers don't buy electoral bonds to BJP. Honorable Speaker, sir, minorities in this country have systematically excluded, economically weakened, politically targeted. Pre-metric and post-metric scholarship for minority students have been slashed by 60%, from 2,515 crore to just 1,689 crore. The Maulana Azad Fellowship have been completely scrapped. Funds for the Ministry of Minority Affairs reduced by 2,000 crores when compared to UPA government. This is not a development. This is an economic blockade against minorities. Honorable Speaker, Madam, there is a systematic discrimination against my state of Tamil Nadu. We are among the top performing states in the manufacturing, IT and export. We contribute significantly to the national exchequer through tax. Yet, what do we get in return? We are completely targeted, systematically discriminated, and face the betrayal and unfair treatment. The government is not just neglecting Tamil Nadu, but it actively punishing us for being successful, politically independent and progressive. If we think this financial bill is an economic document, we are mistaken. This is a political weapon in the hands of ruling party used to suppress the state that do not align with the ideology of the BJP, which is divisive and hateful. I'm finishing with, Madam. Tamil Nadu is a state that believes in self-respect, federalism, social justice and people welfare. But this government wants to control state like Tamil Nadu through economic blackmail. I will say with all humility that if you will never win this battle, Madam, Honorable Chairman, Madam, to sum up, this finance bill is a document of discrimination, corporate favoritism and economic oppression. This is not Amrit Kaal, this is a Vikat Kaal, an era of destruction, deception and distress. Thank you. Very good. माननीय सदस्य श्री तेजस्वी माने जी है नहीं क्या? माननीय सदस्य श्री धैर्यशील माने जी। नमस्कार, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में फाइनेंस बिल 2025 पे बोलने का मौका दिया। आज भारत देश एक नई प्रगति की आयाम छू रहा है और इस रफ्तार को आगे ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से मैं आपका ध्यान अनेक चीजों पे आकर्षित करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगा श्री मोदी जी का कि थर्सडे को उन्होंने छावा नामक जो मूवी देश में चल रही है उसको पार्लियामेंट में दिखाने का निर्णय लिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। लेकिन सर, मैडम, कई ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब का पुरस्कार करते हैं, वो ये मूवी यहां लगाने नहीं चाहते। जिस शिवपुत्र संभाजी ने अपना प्राण इस देश के लिए, देव देश आणि धर्मासाठी ज्यांनी प्राण या देशामध्ये त्यागले, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुपुत्राचा, त्या छाव्याचा चित्रपट आज देशाच्या संसदेमध्ये लागतोय, याचा सार्थ अभिमान महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला आहे। आणि मला गर्व आहे की संभाजी महाराजांचा छावा हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ही
पार्लमेंटमध्ये त्या ठिकाणी दाखवणार आहे. सर, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जो नया रोल मॉडल आगे लेके प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, यह जज्बा उनको मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज से. टैक्सेशन सिस्टम तब के टाइम में जो हुआ करता था शिवाजी महाराज के टाइम में, उसको इलैबोरेट करते हुए एक ही टैक्स लोगों पे होना चाहिए. बहुत अलग अलग टैक्स के सेक्शंस कांग्रेस के टाइम में यहाँ देश में चलते थे, लेकिन उसको अलग थलग दिखाते हुए उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें जीएसटी के माध्यम से हर एक टैक्स पेयर को उसमें लाया. टैक्स पेयर सिर्फ टैक्स नहीं भर रहा है सर, मैडम, तो इस देश के प्रगति का भागीदार हो रहा है. एक विकसित भारत का स्वप्न जो लेके भारतवर्ष का आदमी आगे बढ़ रहा है, उसको आगे ले जाने का काम ये टैक्स पेयर कर रहा है. और उसको मालूम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है, वो रोड्स के माध्यम से हो, रेल्स के माध्यम से हो, बाल स्वास्थ्य के माध्यम से हो, महिलाओं की उन्नति के बारे में हो, हर जगह भारत एक नई ऊंचाई छू रहा है. और उसके लिए एक रोड मैप लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं. मैं निश्चित रूप से बजट में कुछ चीजें जो अच्छी की गई, उसमें 12 लाख रुपए का भुगतान जो करते हैं, 12 लाख का पगार जो लेते हैं या जिनके आय 12 लाख के नीचे है, उनको टैक्स फ्री करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है. मैडम, ये बहुत क्रांतिकारी निर्णय है जिसके माध्यम से आम आदमी की आय उसको टैक्स फ्री करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा. जिसका सिर्फ 60,000 की आय जिसकी थी उसको टैक्स फ्री करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में था, उसको 12 लाख तक ले जाने का काम नरेंद्र जी मोदी सरकार ने करा है. मैं इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से आपसे बात शेयर करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा, जजिया कर लगा करता था मुगलिया सल्तनत में, और जजिया कर के लिए उसको प्रोत्साहन देने का काम इसने, जब ये जीएसटी आया तो इसे गब्बर टैक्स का नाम दिया गया, जजिया कर का नाम दिया गया. जिस औरंगजेब का पुरस्कार ये कर रहे हैं कर्नाटक सरकार में, एक तरफ यहाँ विपक्ष के नेता संविधान हाथ में लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटक में संविधान बदलने की बात यही लोग करते हैं. मैं निषेध करता हूं ऐसी सरकार का जो संविधान को कटघरे में रखने का काम ये लोग कर रहे हैं. बाबा साहेब अम्बेडकर के माध्यम से दिया हुआ संविधान इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और उस संविधान को सर पे लगा के, दिल में बसा के प्रधानमंत्री जी आगे का दौरा कर रहे हैं. लेकिन इनको इस पे राजनीति करनी है, और इस राजनीति का टच कसने के लिए वो निचले स्तर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं महाराष्ट्र से आता हूं. कुछ 2 दिनों से आप टीवी पे देख रहे होंगे कि जिसका एक कमरा खाली है, वो जोकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अनाप शराब बक रहे हैं. मैं इस सदन के माध्यम से, कुछ नियम नीतियां बननी चाहिए सर, कुछ तो ड्रॉ लाइन होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करने से अच्छा आप नीतियों पे टिप्पणी करें तो उसका जरूर स्वागत होगा. कॉमेडी के नाम पे कई लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें एक गांजा भूत नामक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का अगर गांजा भूत नाम हो तो समझ ले, वो यहां से स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और महाराष्ट्र में कोई कॉमेडियन जोकर जाके वो स्टेज पे बौखला जाता है. मैं इस संसद के माध्यम से निश्चित रूप से डिमांड करना चाहूंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बंदी लानी चाहिए जिससे के माध्यम से हेट्रेड स्पीच या 2 लोगों में तनाव का वातावरण एक राज्य में बनते हुए देखा जाए. मैं कुछ मांगे आपके सामने सर मैडम यहाँ रखना चाहूंगा. नीतियां अच्छी बने तो और कारगर तरीके से काम होता रहता है. महाराष्ट्र के किसानों के लिए और डिमांड्स में यहां मैं अपने सामने रखना चाहूंगा. ट्रांसपेरेंट नीतियां बनने के लिए टैक्सेशन सिस्टम में सिंप्लीफाइड पना लाने की जरूरत आपने करी है, लेकिन उसमें सर खाद का जो यहाँ है, किसानों की खाद जो है उसको और कम करने की जरूरत है, जिसमें ज्यादा मुनाफा से किसानों को मिल सकता है. बहुत ज्यादा टैक्सेशन के माध्यम से, सर 2 मिनट मेरे बाकी है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं. किसानों की आय बढ़ने में उसका फायदा होगा. एग्रीकल्चर सेक्टर में 5% जीएसटी है. इनपुट्स के पहले 6% था, आज यहाँ 18% जीएसटी अमोनिया और रॉ मटेरियल पे लग रहा है. उसको अगर कम किया जाए तो निश्चित रूप से फर्टिलाइजर्स में उसका फायदा होगा. मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की आखिर बात मैं यहाँ करके अपनी बातों को विराम दूंगा. मैडम, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नागपुर रत्नागिरी हाईवे जा रहा है जिसका काम अभी प्रगति पथ पर है. उस सेक्शन का एक चौकाक से आंकलिक तक का सेक्शन, हर चौराहे पे हर जगह
4 गुना मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसी सेक्शन पे अन्याय करते हुए दुगना मुआवजा देने की सिफारिश हुई है। मैं केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करने की विनती करता हूं। मैडम, एक ही मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं कि उन लोगों पे अन्याय ना हो और किसानों ने जो अपनी जमीन दे रहे हैं उनको चौगना यहाँ मुंह बदला मिले, ऐसी मैं मांग। माननीय सभापति महोदया, आपने वित्त विधेयक 2025 पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। मेरा ये मानना है किसी भी देश की प्रगति का जो प्रतिबिंबित करता है उसकी कर संरचना है, और हर देश की अलग अलग स्थितियां होती हैं। भारत एक किसानों का प्राथमिकता वाला देश है। हमें जो अपनी कर संरचना रखने की आवश्यकता है वो कृषि विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए, लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। लेकिन दुखद बात है कि जो हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो सोच है, वो इनकी सोच है कि हम पहले कारपोरेट घराने को अगर बड़ा कर लेंगे तो देश समृद्धशाली हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा। अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो महात्मा गांधी जी का जो अर्थनीति थी उसके रास्ते पर चलना होगा। इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को मिटाकर समता बनाने का काम करना होगा। उसके लिए हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आज दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमारे देश में जो असमानता है वो बड़े पैमाने पर है। विश्व में असमानता सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो भारत में है। आबादी के पास देश की कुल 1% आबादी के पास देश की कुल आय का 22.6% और कुल संपत्ति का 53% हिस्सा है। शेष 10% आबादी के पास कुल आय का 57% और संपत्ति का 27% हिस्सा है। इसके विपरीत निचली 50% आबादी के पास जीडीपी के केवल 13% और संपत्ति का 4.1% हिस्सा। इतनी असमानता है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में समानता केवल जो संपत्ति विवरण तक सीमित नहीं है, बल्कि कर संरचना प्रणाली में भी इनका शहरी झलक दिखाई पड़ती है। ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार निचली 50% आबादी जो केवल 4.1% संपत्ति जिसके पास है वो जीएसटी का 64% भुगतान कर रही है, और दूसरी तरफ मध्य वर्ग जो 30% की अधिक है वो 30% जीएसटी का भुगतान कर रही है। इसके विपरीत देश की सबसे अमीर 10% आबादी केवल 5% से कम जीएसटी का भुगतान कर रहा। यानी जो हमारा कर संरचना है उसका सबसे ज्यादा असर वो कमजोर वर्गों के ऊपर पड़ रहा है, जो गरीब हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। उक्त आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक नीतियों के संतुलन का परिणाम है, जिसके कारण भारत में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज में बढ़ोतरी, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। किसानों के जितने भी यंत्र हैं उस पर 18% जीएसटी लगाकर किसान की कमर तोड़ने का काम किया गया। पूरे देश में भी माननीय मंत्री जी से हमारे माननीय भदौरिया जी ने प्रश्न किया था कि किसान की आमदनी न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। इस पर जो है जवाब दिया, और जो दिया कि किसान जो है उसका परिवार की जो आय है वो 10,278 रुपया। इसको अगर महीने में आप उसको अगर 4 परिवार है एक में और उस पर विभाजन करने का काम करें तो 80 रुपए प्रतिदिन की उसकी आय है। इस तरह की हालत किसान की है, और उसके बाद भी किसान के ऊपर टैक्स लगाया गया। महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहता कि आज अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो निश्चित रूप से जो हमारी अर्थनीति है वो किसानों को प्राथमिकता देना चाहिए। आज किसानों की जमीन ली जाती है, ग्रहण की जाती है, उसका जो सर्किल रेट है पुराना है, जिसके कारण उनको मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाती।
उनका सस्ती जमीन लेकर उद्योग लगाने के लिए दिया जाता है। इसलिए हमारा ये मानना है, जो देश के ऊपर इस अभी हमारे कई साथी जिक्र कर रहे थे कि देश की हमने आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का काम किया। हमारी जो इकोनॉमी है इस देश में 11 वर्षों से में लगभग 1,81,000 करोड़ 181 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा। निश्चित रूप से जहां पहले एक व्यक्ति पर 42,000 रुपए का कर्जा था, जो 140 करोड़ की आबादी माने, आज 1,42,000 का प्रत्येक व्यक्ति पर कर्जा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अगर हमें इसको ठीक करने का काम करना। सभापति महोदय, मैं अत्यंत आपका आभारी हूं कि आपने माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत फाइनेंस बिल के समर्थन में मुझे बोलने की अनुमति दी है। अभी मैं कल से काफी सदस्य सत्ता पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों, मैं सभी के विचार सुन रहे थे। आखिर हमने जब बजट पास कर लिया, गिलेटिन कर लिया, उसके बाद फिर ये फाइनेंस बिल आता है, तो ये फाइनेंस बिल का जो उद्देश्य है वो क्या है? ये प्रतिवर्ष फाइनेंस बिल हमारी वित्त मंत्री लेकर के आती है और फाइनेंस बिल में जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं, पूरे वर्ष के जो फाइनेंशियल प्रस्ताव होते हैं, उसकी रूपरेखा होती है। जो फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं या जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्ट हैं, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, 61 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट हो 2017, कस्टम टैक्स हो 72, कस्टम टैरिफ एक्ट हो 75, सेंट्रल एक्साइज एक्ट हो 1944, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ये सारे, इनमें अगर कोई बदलाव होता है, अगर कुछ इसमें फाइनेंस के मॉनेटरी बदलाव करते हैं, तो इसको और एक्ट के और स्कीम्स का सबका समावेश करके वर्ष के प्रारंभ में फाइनेंस बिल को लेकर के आते हैं। लेकिन मैं कल सुन रहा था अपने कांग्रेस के सम्मानित नेता डॉक्टर शशि थरूर को, जो उन्होंने इनिशिएट किया। उन्होंने कहा कि उदाहरण 3 चीज का दिया कि आई कुड नॉट फिक्स योर ब्रेक्स सो आई मेड योर हॉर्न लाउडर। फिर दूसरी बात कहा, आई कुड नॉट रिपेयर द रूफ एंड आई ब्रॉट यू एन अम्ब्रेला। एंड तीसरी बात कहा कि क्लासिक केस ऑफ पैच वर्क सॉल्यूशंस। आखिर शशि थरूर जी विद्वान हैं, अगर वो ये कहें कि एक क्लासिक केस ऑफ पैच वर्क है या हम रूफ को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो अम्ब्रेला मिला रहे हैं, अगर हम ब्रेक नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो हॉर्न हम तेज कर दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार छत को रिपेयर करने की बात नहीं करती है, बल्कि वित्तीय समावेशन से नई छत बनाने का काम करती है और उस छत से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि आखिर यही सदन है, आप भी थी सदस्य, वित्त मंत्री जी भी थे, पूरा दुनिया कहता था, दुनिया में भारत की निगाह क्या थी कि भारत की छवि एक बनाना रिपब्लिक की थी, कि बनाना रिपब्लिक है, न यहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रांग है, न कोई एफडीआई कर रहा है, न कोई पूंजी निवेश कर रहा है। जिन्होंने पूंजी निवेश किया वो अपनी पूंजी को बाहर लेकर के जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। तो एक बनाना रिपब्लिक की इमेज कांग्रेस यूपीए की सरकार में थी, और आज शशि थरूर जी कह रहे हैं रिपेयर करने की बात। आज इस सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाना रिपब्लिक से निकाल करके इसको री इमर्जिंग इकोनॉमी किया है, जिसको पूरी दुनिया स्वीकार करे। और ये बात जगदम्बिका पाल नहीं कर रहे हैं कि री इमर्जिंग इकोनॉमी है, ये री इमर्जिंग इकोनॉमी दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री है जो एंगस मेडिसिन, उस एंगस मेडिसिन ने कहा कि आज भारत की जो इकोनॉमी है आज वो री इमर्जिंग है। क्या ये नहीं बात थी कि टॉप 5 फ्रेजाइल में भारत की गिनती नहीं होती थी, कि भारत की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 5 फ्रेजाइल में, गौरव जी भी इस पर सहमत है। तो टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी जो 14 तक कही जाती थी, आज वो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत को लाने का काम किया है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं और अपने प्रधानमंत्री जी को। और ये बात नहीं है कि हम वहीं रुकने वाले हैं। जब विकसित भारत की बात अभी लालजी जी ने कहा, लालजी ने कहा, ज्योति बहन ने कहा कि ये कॉमनर के लिए नहीं है, रिच लोगों के लिए है। मुझे नहीं लगता पूरे देश ने कहा कि शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा
कि 7 लाख से इनकम टैक्स को 12 लाख रिवेट करने का काम किया। ये कौन लोग थे? सैलरी पाने वाले लोग, मिडिल क्लास के लोग, ये रिच लोग हैं। अगर इनको ये दिखाई पड़ रहा है, और आज हम 2017 तक, आज हमारी सरकार का संकल्प है कि इसको हम टॉप 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी में ले जाना चाहते हैं। और आप इसका पैमाना क्या होगा? इस फाइनेंस बिल पे जब हम खड़े हैं, बोल रहे हैं, तो इसका होगा कि अगर इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो उसका पैमाना, पैरामीटर तो यही होगा कि आखिर आज हमारी क्या ग्रोथ रेट है, जीडीपी रेट है, और क्या चाइना की, जिस चाइना की दुहाई राहुल गांधी देते हैं, रोज चाइना मॉडल की बात करते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि आज पूरी दुनिया में इंडिया इज नॉट ओनली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, आज इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5% है और चाइना की केवल 4.6% है। और उसके बाद भी चाइना की बात गौरव जी अपने नेता से कहिए, थोड़ा पढ़ लें। यूनाइटेड स्टेट्स की क्या है? 2.1% है। मैं आपके माध्यम से उनको तो ज्ञान दे नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको जानकारी दे सकता हूं, और मैं आपको उपनेता है तो जानकारी दे रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स की क्या है? 2.1 है। यूनाइटेड किंगडम के 0.6% है। रसिया की क्या है? 2.6%। आज पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में आखिर हमने चाहे फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, नहीं, आप सुन लीजिए, माननीय सदस्य, मैं जो बात कह रहा हूँ बड़ी चुनौती के साथ, मैं बड़ी चुनौती के साथ कह रहा हूँ सभापति महोदया, कि आज संघीय ढांचे की बात करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ मोदी जी को, वित्त मंत्री जी को, कि आप संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं। पहली बार इस संघीय ढांचे में हम आज जो हमारे फाइनेंस बिल पे आया है, आज इस सरकार का अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में विश्वास नहीं है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में विश्वास कर रहे हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब हम ज्यादा खर्च करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से एयरपोर्ट्स बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, एक्सप्रेसवेज बनते हैं, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, एम्स बनते हैं, हमारे IIM बनते हैं। और आज उसी सरकार के कैपिटल क्रिएशन के में विश्वास करती है। और इसमें हम आंकड़े देना चाहते हैं कि आज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कितना कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में जो देश के लिए परिसंपत्तियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो देश के विकास की आधारभूत ढांचा होगा, जो उसकी नींव होगी, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को पिछले साल की तुलना में 10.1% हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। राज्य की बात करते हैं, कहते हैं शशि थरूर जी ने कह दिया कि जीएसटी ये पनिशमेंट। अरे भैया, आप अच्छी अंग्रेजी बोल के देश को क्यों गुमराह कर रहे हो? जीएसटी ये पनिशमेंट। आज हमने दिया है राज्यों को इस वर्ष हमने 12.5% से अधिक पैसा केवल उन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमने 12.5% राज्यों को दिया है, जिसमें 25 लाख करोड़ राज्य की सरकारों को केंद्र सरकार ने दिया है कि आप अपने राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए, हाईवेज मजबूत करिए, वहां की सारी चीजों। पहली बार 1.5 लाख करोड़ हमने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। आज तो इनको तारीफ करनी चाहिए, केसी वेणुगोपाल जी भी आ गए, किस तरीके का फाइनेंस बिल जो पूरे वर्ष का लेखा जोखा है कि आने वाले में, और सही मायने में मैं समझता हूँ संघीय ढांचे को मजबूत किया। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। बड़ी बात फिस्कल डिफिसिट की हुई, बहुत बात रेवेन्यू डिफिसिट की बात हुई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हुई, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई, कैपेक्स की बात हुई। मैं थोड़ी बात कह देना चाहता हूं कि आज फिस्कल डेफिसिट, जिस समय पूरे दुनिया में कोविड आया, उस कोविड में भारत भी प्रभावित हुआ, पूरी दुनिया प्रभावित हुई। और उस कोविड के जमाने में हमारी फिस्कल डेफिसिट, अंतर भी क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इस पे भी कोई खास चर्चा नहीं। फिस्कल डेफिसिट जो पूरे साल का एक्सपेंडिचर होता है, प्राप्तियां होती हैं, उससे अगर प्राप्तियों से, रिसीप्ट से ज्यादा खर्चा हो, फिर वो पूरे साल का एक कैलकुलेशन होता है, फिस्कल होता है। डे टू डे का हो, उसको जब हम खर्च को प्राप्तियों से ज्यादा है तो वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो जहां कोविड के दौरान 2020-21 में 9.2% इस देश का फिस्कल डेफिसिट हो गया था, प्राप्तियों से ज्यादा खर्चा हो गया था, आज 2024 में उस 9.2% फिस्कल डिफिसिट को घटा करके हमारी सरकार ने 4.5% फिस्कल डिफिसिट किया है। मैं इसके लिए भी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा हूं। रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार, कांग्रेस यूपीए सरकार में थी, 2014 में थी, उनका 3.1% उस समय रेवेन्यू डेफिसिट था।
कहते थे हमने इतना रेवेन्यू डेफिसिट, हमने फाइनेंशियल कंट्रोल किया, डिसिप्लिन किया। आज उस रेवेन्यू डेफिसिट को भी 3.1% जो कांग्रेस यूपीए की सरकार में थी, 3.1% से घटा करके 1.5% हमारी भाजपा एनडीए की सरकार ने किया है। इससे क्या है कि बेटर क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग एंड इम्प्रूव टैक्स बुओयंसी, कि हमने किस तरह से अपने खर्च का सदुपयोग करना शुरू किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू तनख्वाहों में जाता है, इस्टेब्लिशमेंट में जाता है, जिसका कोई आउटपुट नहीं होता। हम 14 में इन्होंने 13.9 लाख करोड़ किया, आज रोजगार दिया, हमने पे स्केल बढ़ाया, आज उसको बढ़ा के 39.71 लाख करोड़ हमने इंक्रीज किया। मैं पाँच मिनट तो बोलने दीजिए, अभी 3 मिनट हुआ। और इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लीजिए, 1.9 लाख करोड़ 2014 में 1.9 लाख करोड़ था। मैं बिल्कुल कम समय लूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आंकड़े सरकार के दे रहा हूँ। 1.9 लाख करोड़ इन्होंने कैपिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, परिसंपत्तियों पे, और आज बीजेपी एनडीए सरकार में 1.9 लाख की तुलना में 11.11 लाख, 11.11 लाख करोड़ हम आज हाईवेज पे खर्च कर रहे हैं, इंटरवाल पे कर रहे हैं। कैपेक्स है जो 0% जीडीपी, इनके जमाने में 1.7% था, आज हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री 3.4% हो गया। मैं कहना चाहता हूं, केवल कुछ पॉइंट देना चाहता हूं कि चाहे विमेन हमारी, अगर विमेन एम्पावरमेंट बात प्रधानमंत्री करते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की बात, प्रधानमंत्री जी का सबसे ज्यादा फोकस एससी एसटी और हमारे विमेन और नॉर्थ ईस्ट पे है। इसके एम्पावरमेंट के लिए मैं केवल आपको 1 मिनट में बात कह देना चाहता हूँ। ये जो बजट है, ये विकास का बजट है, और जो बजट है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी असली तस्वीर है। और वो आप देख लीजिए कि वेलफेयर, विमेन वेलफेयर के लिए देख लीजिए, विमेन वेलफेयर के लिए 24-25 में 3,76,529 करोड़ था। हमने पिछले साल की तुलना में महिलाओं के बजट को, सभापति महोदय मैं खत्म, महिलाओं के बजट को हमने 3,76,529 करोड़ से बढ़ा के 4,49,029, हमारी सरकार ने 19.3% पिछले साल से ज्यादा महिलाओं के लिए बजट का प्रावधान किया है। और चिल्ड्रन के लिए, वेलफेयर के लिए 1,04,45 करोड़ था, आज उसको बढ़ा के 1,16,133 करोड़ किया है। 15 पॉइंट, बस इसी मैं पढ़ दे रहा हूँ 4 बात को, 15.6% हमने बढ़ाया है बच्चों के वेलफेयर के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 1,38,363 करोड़ पिछले साल का था, हमने 21% शेड्यूल कास्ट के लिए बजट हमारी सरकार ने बढ़ाया। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि 1,38,000 से 1,68,478, 21.8%। शेड्यूल ट्राइब के लिए मैं कह देना चाहता हूँ 1,07,874 से बढ़ा के 1,29,250, 19.8% बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट रीजन, मैं एक बात अपनी, मैं एक बात कह दूं, एक बार मैं बात तो बहुत करनी थी कि धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अर्थमंत्री यांनी मांडलेल्या फायनान्स बिलावरती बोलण्याकरता मी आपल्या समोर उभी आहे। भारतात सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणून कृषी क्षेत्र आहे, मात्र केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत गंभीरतेने घेतलेले नसून दुर्लक्ष केल्यामुळे विशेषतः महाराष्ट्राच्या विदर्भातील शेतकरी हा पूर्णपणे कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहे। सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेल्या अनेक योजना या तोकड्या असून शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत वर्षानुवर्ष घसरण होत चाललेली आपण पाहिलेली आहे। याकरिता शालेय अभ्यासक्रमात शेती तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे, तालुकानिहाय कृषीपूरक व्यवसाय करणे, कृषीवर आधारित उद्योग सुरू करणे, सिंचनाच्या सोयी सुविधा या बारमाही उपलब्ध करून देणे, पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था करून देणे, त्यासाठी नदी जोड कार्यक्रम राबवणे, शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण मोफत करणे आणि शेतमजुरांना अर्थव्यवस्थेसाठी प्रोत्साहन देणे अत्यंत गरजेचे आहे। अध्यक्ष महोदय, शेतमजुरांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रोत्साहन भत्ता लागू करणे, खते व बी बियाणे माफक दरात उपलब्ध करून देणे आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना जे पाहिजे त्या सगळ्या गोष्टी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध जर का करून दिल्या तर नक्कीच शेतकरी हा चांगल्या पद्धतीची शेती करू शकेल। माझी मागणी आहे की शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमी भाव देणं अत्यंत गरजेचं आहे। सीसीआयची
कापूस खरेदी आपण पाहिलं असेल की मध्यंतरी काही काळात कापूस खरेदी बंद होती, पण ती कापूस खरेदी चालू ठेवून जोपर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्याचा कापूस हा विकला जाणार नाही तोपर्यंत खरेदी केंद्र हे सुरू राहिले पाहिजे. मला आवर्जून या ठिकाणी सांगायचं आहे की सगळ्यांनी आपापल्या विभागाचे बिल या ठिकाणी मांडले. महाराष्ट्रातही विधानसभेची निवडणूक भाजपाने लढवली आणि निवडणूक लढवत असताना त्यांनी आश्वासन दिलं होतं की विधानसभेत भाजपाचं सरकार जर का आलं तर नक्की आम्ही पूर्णपणे कर्जमाफी शेतकऱ्यांची करू. आज 4 महिन्याचा कार्यकाल लोटला, सगळे निवडून आले, मंत्री झाले, मंत्रिमंडळ स्थापन झालं, पण अजूनपर्यंत महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या बाबतीत दिलेलं आश्वासन या ठिकाणी पूर्ण झालेलं नाही. आपण पाहिलं असेल जलजीवन योजनेच्या बाबतीत अनेक लोकांनी स्मृती सुमने या ठिकाणी उधळली, पण मी आवर्जून या ठिकाणी सांगितलं जे भाजपवाले जलजीवन योजनेच्या बाबतीत बोलत आहे, खरंच जलजीवन योजना ही कार्यान्वित होत असताना प्रामाणिकपणे काम करताय का याचं उत्तर छाती ठोकपणे प्रत्येक बसलेल्या सदस्यांनी या ठिकाणी दिलं पाहिजे. आपण पाहताय की जलजीवन योजनेमुळे अतिशय वाईट अशी परिस्थिती ग्रामीण भागातली झाली, सगळे रोड त्या ठिकाणी तोडून टाकले, पण कुठल्याही पद्धतीच्या पाणी नळाला अजूनपर्यंत आलं नाही. फक्त हर घर नल हर घर जल ही योजना फक्त कागदोपत्री ठीक आहे, पण अजूनपर्यंत कार्यान्वित आजही ही योजना झालेली नाही. प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या बाबतीत जर का बोलायला गेलं तर पीक विम्याचा एकही रुपया अजून शेतकऱ्यांना मिळाला नाही आणि छाती ठोकपणे आपण सगळेजण सांगत आहे की या योजनेमुळे आपल्या सगळ्यांना लाभ मिळालेला आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या बाबतीत जर का विचार करायचा झाला तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या रस्त्याची व्यवस्था ही अतिशय वाईट आहे. त्यातल्या त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते हे थोडेफार तरी बरे आहे, पण ग्रामविकासचा जर का आपण विचार केला तर ग्रामविकासच्या रस्त्याची अवस्था ही अतिशय वाईट आहे. म्हणून मी आपणास सांगू इच्छितो की जो आमदार म्हणून निवडून जातो त्याला 25-15चा असो, 50-54चा असो किंवा 30-54चा निधी हा त्या ठिकाणी मिळतो, पण खासदारांची परिस्थिती त्यापेक्षाही वाईट आहे. म्हणून खासदारांना काही ना काही निधी त्या ठिकाणी ग्रामविकास मधून तरी आपण द्यावा अशी विनंती मी आपल्याला या ठिकाणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात उन्हाळ्यात पाण्याची अवस्था देखील तशीच आहे. अत्यंत गंभीर समस्या ही पाण्याची असून पावसाळ्यात मात्र अनेक ठिकाणी पुरामुळे गावाचे तसेच शेतीचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. नदीमध्ये बारमाही पाणी राहण्यासाठी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना नदीजोड योजनेची अंमलबजावणी त्यांनी केली होती आणि तीच योजना आजही कार्यान्वित करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आजही सरकार गंभीर नाही. माझी आपणास विनंती आहे की नदीजोड योजना अभियाना अंतर्गत सर्व नद्यांना एकमेकांशी जोडल्या तर पाण्याची समस्या दूर होऊन शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सिंचन व्यवस्था त्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राच्या बाबतीत आपण जर का विचार केला तर महाराष्ट्र हा मोठ्या प्रमाणात कोळसा उत्पादन करणारा राज्य म्हणून त्या ठिकाणी आहे. त्यातल्या त्यात माझी लोकसभा ही मोठ्या प्रमाणात कोळसा खनिज आणि वीज निर्मिती करणारा जिल्हा आहे. अनेक WCLच्या माइन्स त्या ठिकाणी मंजूर होत असतात. माइन्स मंजूर झाल्यानंतर आपण पाहिलं की ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी माइन्स मध्ये जातात त्यांना महाराष्ट्रात आदरणीय पृथ्वीराज बाबा चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना 7 लाख ही पडीत जमिनीला, 8 लाख रुपये कोरडवाहू जमिनीला आणि 10 लाख रुपये हे सिंचित जमिनीला मोबदला मिळत होता. आजपर्यंत तो मोबदला कायम आहे. माझी आपणास विनंती आहे की पडीत जमिनीला 18 लाख रुपये, 20 लाख रुपये ही कोरडवाहू जमिनीला आणि सिंचित जमिनीला किमान 22 लाख रुपये तरी आपण त्या ठिकाणी दिले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी बोलत असताना मला आवर्जून या ठिकाणी आपल्याला सांगावं असं वाटते की 10 वर्षापासून आपण पाहिलं असेल की महाराष्ट्रात आणि इतरही ठिकाणी 10 वर्षापासून सामान्य लोकांचे जीवन समृद्ध बहुराज्य सरकार संस्था, मैत्रेय, सहारा व इतर संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणारे अनेक लोक आपण पाहिले. या गुंतवणूकदारामध्ये मोलमजुरी करणारे मजूर, गावखेड्यातील गरीब कुटुंब, सेवानिवृत्त कर्मचारी या सर्वांनी आपलं जीवन या ठिकाणी व्यतीत केलं. आर्थिक कमाई ज्यांची अतिशय अल्पशी अशी आहे अशा लोकांनी, सेवानिवृत्त कर्मचारी या सर्वांच्या जीवनभराची केलेली आर्थिक कमाई यात इन्व्हेस्ट केली. पण आपण पाहिलं की महागाईच्या काळामध्ये या सर्व गरीब कुटुंबाला आर्थिक अडचण भासत आहे. कमीत कमी या लोकांचा जो सहारा ज्यांनी पैसा इन्व्हेस्ट केला अशांची समस्या आपण धन्यवाद सभापति जी जिन्ने सत्ता धिर दे मैंबर जिहड़े
कल भी बोले, पहला भी बोले, अज भी बोले, हर एक ने यही गल का जिहड़ा जिक्र है दोबारा कीता कि साडे जिहड़े देश की इकोनॉमी है वो दुनिया की अज की घड़ी पंजवीं तो बड़ी जल्दी तीजी बन जानी है। पर सभापति जी, इहदे नाल देश के लोगों को फायदा की, क्योंकि जिहड़ी पर कैपिटा इनकम है साडे देश की वो अज भी 139वें नंबर ते है। तुसीं देखो भी लोगों के हालात किदां दे है, क्योंकि अज महज 1% साडे देश के लोग है जिन्हां कोले 40% देश का जिहड़ा पैसा है, ते बाकी 99% कोले तुसीं देखो की हालात होणगे। अज भी केवल 10% वो लोग है जिहड़े 25,000 रुपए तो उपर प्रति महीना कमा रहे हैं, तो तुसीं देखो भी बाकी 90% के किदां दे हालात ने, ते जिन्हां दी कमाई भी है नहीं ते सब तो वध जिहड़ा बोझ है उन्हां ते पाया गया। क्योंकि जिहड़ी देश की कमाई है, रेवन्यू है, इहदे चों 66% जिहड़ा इंडायरैक्ट टैक्सेस चों आउंदा है, ते इंडायरैक्ट टैक्स कौन दिंदा? वो जिहड़े आम लोग ने वो दिंदे है। तुसीं देखो भी अज एक 10 रुपए की बिस्कुट की डब्बी है, जिहदी तां महीने की 10 लाख की कमाई है ਉਹਨੂੰ भी उत्ते 2 रुपए टैक्स, ते जिहदी महीने की 5,000 रुपया कमाई है ਉਹਨੂੰ भी 2% टैक्स। सो सब तो वड्डा बोझ, सब तो वड्डी कमाई उन्हां लोकां तो कीती जा रही है जिन्हां दी कमाई सब तो घट है। क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक ਜਿਹੜੇ निचड़ले 50% है, क्योंकि तुसीं देखो भी उपरले ਜਿਹੜੇ 10% भी वो भी 25,000 वाले है, ਜਿਹੜੇ नीचे वाले 50% है वो देखो किदां दे होणगे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ कंट्रीब्यूशन है ਜਿਹੜੀ इनडायरैक्ट टैक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लगभग 64% है, ਤੇ ਜਿਹੜੇ टॉप वाले 10% है ਉਹਨਾਂ ਦੀ केवल 3% है। सो एक बहुत ਵੱਡਾ ਪਾੜ है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ टारगेट सी कि 4% तो ज्यादा वध नहीं देवांगे, 2 ऊपर भी हो सकता है 2 नीचे भी हो सकता है, पर अज इन्फ्लेशन भी 6.5% के हिसाब नाल वध रही है, जिहदा सीधा बोझ देश के जिहड़े लोकां दे पै रहे है। पर जिहड़ी असली चीज जिहड़े आम लोकां लई करन दी जरूरत सी ਉਹ ਸੀ ਸਿਹਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2.5% ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ 2025 ਤੱਕ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.3% ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਪਰ बड़े दुख की गल है कि पंजाब नूं कदे भी ना कोई स्पैशल पैकेज ना इंडस्ट्रीयल पैकेज कदे भी कुछ दिता गया। साडे पंजाब दे लोग बहुत मेहनती है, बड़े दलेर है। जिहड़े पंजाब दे गवर्नर सी सुरेंद्र नाथ, उन्होंने अपनी किताब इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी दे विच लिखिया कि जदों पंजाब दा काला दौर सी उदों भी जिहड़ी पंजाब दी जिहड़ी इंडस्ट्री सी वो बर्बाद नहीं हुई, जो लगदा सी कलैप्स कर जू उदों भी चलदी रही ते वधदी रही। पर साडे पंजाब दी इंडस्ट्री पंजाब बर्बाद उदों होया जो साडा गवांढी सूबा हिमाचल प्रदेश ਉਹਨੂੰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 2003 ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2024 ਤੱਕ 25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਫॉर ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੰਡਿਆਇਆ ਗਾ, ਧੂਰੀ ਹੈ, ਦਿੜਬਾ, ਚੀਮਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਹੈ
ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨ ਕਲਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਡਮ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, Chairperson, Madam Chairperson, for allowing me to raise one or two points in this discussion of finance bill. I think there are some hidden agendas inside this finance bill which I want to bring into the notice of Honorable Minister. For example, in this finance bill, the powers and authority of central government, you see, without prejudice, the clause 144(1), without prejudice to the provisions of the pension rules, the central government shall have the authority to establish distinction among pensioners as a general principle. Why this distinction among the pensioners? My simple question to the finance minister, why there is a distinction among the pensioners? When we see these details, it is hereby mentioning that notwithstanding anything contrary contained in any judgment, decree, or order of any court, tribunal, or authority, and now notwithstanding anything contained in the pensioners' rules, it is hereby clarified the central government has the authority and shall always deem to have had the authority, retrospective effect, had the authority to classify its pensioners and may create or maintain distinction amongst pensioners as deemed expedient for implementing the recommendations of the Central Pay Commission under this pact. We need a clarification of the finance ministry. Why this provision? Why you are attacking these poor pensioners of this country? You are telling we are giving so much things for middle class. Now this is a direct attack against the pensioners. I think you have taken the powers of the parliament for pension rules. In a way, you are trying to amend the pension rules through this finance bill. Basically, it is not a good move, madam, at all. I think you need to withdraw that clause in that provision. So, number two, today morning there was a big issue regarding the Manrega issue. You have to understand, madam, in our areas, poor workers, they are living only through this Manrega scheme. Their basically living condition is very bad, but every day they're going to the laborer's job and they're getting them some sort of minimum wages. That is why they are living. Now, last 4 months, they are not getting any single salary. Last 4 months, they are not getting any single salaries. The rule is very clear, act is very clear. If you are delaying 15 days salary, there should be an interest of nothing. They are not getting anything, not even pension, interest, anything. This is affected to Kerala, this is affected to Tamil Nadu, this is affected to UP. All over India, I am telling the scenario. Basically, that is the point number three, I would like to mention about the cuts. You are mentioning about the very elaborately, you are mentioned about the good things about the budget. So far, how many schemes you are on the expenditure side? Total expenditure has been cut by rupees 1,04,025 crore, and capital expenditure has been cut by rupees 92,682 crores. Of this cut, the sectors that have been suffered most: health 1,255, education 11,584, social welfare 10,119 crore, agriculture 10,992 crores,
Rural development, rupees 75,133 crores. Urban development, rupees 18,907. Development of Northeastern, 1,894. And, sir, this crucial cuts were in allocation of the SC, ST, OBC, and minorities. For example, PM Anishtud Jat Abhyodaya Yojana, BE 2024, rupees 2,140 crore. RE 2024 is rupees 800 crore. From 2140 to 800. Sir, PM Young Achievers Scholarship for OBC, EBC, and DNTs. BE 2024, rupees 1,836 crores. 25 RE is, RE 2024 is rupees 1,381 crore. BE 25, on post-matric scholarship for SCs, BE 2024, rupees 6,360 crores. But RE 2024 is rupees 5,500 crores. Program development of ST also the same things. There was this cut, budget cut of this major department, which is affecting the scheduled caste, scheduled tribe, OBC, minority people. How you justify, madam, on this? I would like to know from you that. Then, finally, sir, I don't want to take much of your time. Yesterday, Nishkant Dubey raised so many issues against the previous government. When Union government started in 1947 onwards, that entire story is now telling for justifying this government financial management. You came into power, that entire UPA was time was very bad. Their financial management was which was very good that point of time. But you were telling us that was very bad. Now we are coming for a new thinking. Sabka saath, sabka vikas. Sabka saath, sabka vinash happening in this country, sir. That is what happening in this country, sir. So I'm telling my point, sir. I'm telling my point, sir. Therefore, संसद के अंदर बोलते समय sir, this is sir, speaker, sir. आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आगे का शब्द ठीक नहीं है. Last time also, sir, I requested you, sir, at least feel us also. This house is also belongs to us. At least whenever Rishikant Dubey racing, you allowing everything, you giving mic. Whenever we people are racing, no mic at all. No mic at all. There is no scope. LOP is racing. LOP didn't have any chance to speak. How can Parliament run like this? How can Parliament? How can, sir? You are very generous to the members individually. But I think. एक मिनट, माननीय सदस्य, मैं आपको बार बार आग्रह करता रहता हूं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कभी चेयर पर प्रश्न मत उठाया करें, ये मेरा आपसे आग्रह है. और मैंने जो शब्द बोले उसके बाद जो शब्द बोले वो आपकी पार्टी के लिए भी नहीं, अगर आप समझते उचित है तो ठीक है. Sir, I agree, sir. This is not your fault, sir. Government is, I'm talking about the government attitude, sir. Government don't want us to make news. When Parliamentary Affairs Minister is raising, every time he used to attack us. Yesterday, Karnataka thing happened. What was the real issue? Their reservation for OBC is there. Their reservation, the reservation ambit of OBC has been increased. SC has been increased. ST has been increased. Nobody is not telling. One misleading statement, Jikesh Kumar clarified that. I didn't told like that. He given a legal notice also already. You taken up that issue and one day completely you want to wash out. We are not. Our ruling party wanted to adjourn the house. We are ready to cooperate with you, sir. Today also we are cooperating with the finance minister's bill. We are also cooperating. Whenever you ask us to cooperate, we are cooperating. But at least allow us also to tell about this government's anti-people activities. So my request to Honorable Finance Minister, he is an experienced finance minister. I ask him why this pensioners is going to be in your target list now. How is it? Whether the minister is going to retain this provision in the bill or thinking about the pain and hue and cry of the pensioners, are you going to withdraw that provision? With these words, I am concluding. माननीय सदस्यगणों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2 बजे माननीय वित्त मंत्री जी जवाब देंगे और
कभी भी, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं कि चेयर पर प्रश्न मत करें, ये विशेष ध्यान रखें। सुश्री इकरा चौधरी 2 मिनट में अपनी बात कह दें। माननीय धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं 2025 के वित्त विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए खड़ी हूँ। सरकार इस बजट को जन कल्याणकारी बता रही है, लेकिन क्या ये वास्तव में गरीबों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करता है? क्या ये युवाओं को रोजगार देगा? क्या महंगाई में राहत देगा? लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की जीडीपी पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है और हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 27 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ओर अग्रसर है। लेकिन यह उपलब्धि तब फीकी पड़ जाती है जब हम प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़ों को देखते हैं, जिसमें भारत विश्व स्तर पर 100 से अधिक देशों से पीछे है। 23-24 के लिए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 1,24,600 रुपए है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार इस डेटा पर बात करने से बचती है, क्योंकि वे ये नहीं समझा सकते कि पूरे देश की जीवन स्तर में वृद्धि क्यों नहीं हो रही। वे ये नहीं बता सकते कि देश में इतनी गहरी आय असमानता क्यों बनी हुई है और आम नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में इतनी कठिनाइयां क्यों होती हैं। सरकार दावे करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस विकास का लाभ केवल अमीरों को मिल रहा है। आज हमारे देश में शिक्षित युवा नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहा है। सरकारी नौकरियों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। निजी क्षेत्र में भी नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। उधर देश की शीर्ष 1% अमीरों के पास 40% से अधिक संपत्ति है, जबकि करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है क्योंकि सरकार की नीतियां बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है, जबकि गरीबों और मध्यम वर्ग को महंगाई और टैक्स के बोझ तले दाबा जा रहा है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तब $1 लगभग 60 रुपए के बराबर था और आज 83 तक पहुंच गया है। सर 2 मिनट। रुपए की इस गिरावट का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। इस सरकार की मौजूदा वित्तीय नीतियां पूरी तरीके से अमीरों के पक्ष में झुकी हुई है। भारत एक समाजवादी देश है जहां सरकार का कर्तव्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ अपने नागरिकों को पहुंचाए और उन्हें समान अवसर और सुरक्षा दे। भारत के सरकारी स्कूलों और अस्पताल की हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। सर बस किसानों पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। हमारा देश तब तक सशक्त नहीं हो सकता जब तक हमारे किसानों को उनका हक नहीं मिलता। 2023-24 में भारत की 46% श्रमिक आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत थी, फिर भी इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार किसानों की आय दुगनी करने का वादा करती है, लेकिन असलियत यह है कि खेती की लागत बढ़ रही है, जबकि किसानों की आमदनी स्थिर बनी हुई है। ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% जीएसटी में, सर 1 मिनट, सर किसानों का मुद्दा है, बस 1 मिनट सर, खत्म कर ले। हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% जीएसटी से किसानों को परेशानी और बढ़ रही है। यदि सरकार इस बोझ को कम कर दे तो खेती में फायदा होगा। साथ ही साथ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो मिलने वाली राशि है उसको बढ़ाकर 6,000 से 12,000 कर दे तो किसानों की आय में फायदा होगा। Sir, can I start, sir? Yeah. Sir, while we discuss this finance bill 2025, pardon, sir? 2 minutes. Aye, sir, 2 minutes. Not even 2 minutes. Sir, I would like to bring the invite the attention of the Honorable Finance Minister regarding 2 issues, sir, 2 anomalies in the GST Act. Sir, an amendment was brought in by insertion of Section 7(1)AA of GST Act 2017 in the Finance Act 2021 by giving effect from 1/7/2021, inserting an explanation deeming a club and or association as its members to be 2 separate persons. So the taxable event was enlarged to include activities or transactions between a club or association and its members. So it appears that the amendment was made to overcome the judgment of Supreme Court of India in State of West Bengal versus Calcutta Club. So this has caused a heavy and unforeseen burden on the cooperative societies in as much as the cooperative societies is to collect tax from its members. I would request the Honorable Finance Minister to urgently review this issue
and help our cooperative societies to help its members not to collect tax from the cooperative society members. So second thing is, sir, is this traditional snack industry are forced to charge GST at the rate of 18%. So varying rates for different products for MSME food business has been slapped. Advanced ruling system is the mechanism by which we can correct all this. But the advanced ruling system is dysfunctional, totally dysfunctional in the state of Kerala. So 18% GST is levied on traditional snacks like Palampuri, Vada, Ada, and Kodikota, etc. Sir, produced by these items are produced by micro units, Kudumbasri units, and sold through bakeries. The shelf life is less than 24 hours. Sir, the problem is that they don't get input tax claims also. And no specific HSN codes, and so high tax rate is being levied on these items. The finance minister has gone to consult with the officers, so she is not listening to it. I am sorry. Anyway, sir, I would like the finance minister to give particular attention to these two, GST problems. Sir, finally, sir, just 1 second, sir. Finally, sir, I have requested for a jackfruit board to be established by the government. Sir, jackfruit is known as the the doctor of all fruits, used in Unani and Ayurveda system of medicine. I'm concluding, sir. It is a superfood. No. Sir, the Cleveland University, sir, please. What is this, sir? You are being very unfair. No, 2 minute बोल दें. Sir, just give me 1 second, sir. 1 second, sir. Let me 1 second में खत्म करो. हाँ करिए 1 second में खत्म. हाँ चालू है. आप बोलो. So the Cleveland University, in its comprehensive review, says that this is rich in proteins, vitamins, and minerals. Am I being recorded, sir? No. Sir, plant-based chemicals are there. Potassium is there. Magnesium is there. Phosphorus is there. So the Duke University says that it is nutritionally superior to apples and mangoes. So I would request, Honorable Finance Minister, please, I would request the establishment of a jackfruit board. This will do good for the country. शफी परमीर बोलना शुरू किए. Sir, thank you for the 5 minutes that you are giving me. 2 minute का 5 minute या 2 minute. Sir, 5 minutes, sir, please. आप बोल रहे तो ये भी खत्म हो जाएगा. Sir, we can't see fiscal prudence in this bill or the budget presented by the government. But what we can see is daylight robbery, sir. Sir, I have no time left to explain everything. But just take one example, sir. We have heard so many members from the ruling party mentioning Pandit Jawaharlal Nehru ji, Indira Gandhi ji, and Rajiv Gandhi ji and Dr. Manmohan Singh, enormous number of occasions. They keep on criticizing them. Sir, why can't they recall the then Gujarat Chief Minister's statement on massive hike on petrol prices? In 2012, 23rd May, the then Gujarat Chief Minister, now our Prime Minister, tweeted, massive hike in petrol prices is a prime example of the failure of Congress-led UPA. If it was a failure then, what it is now, sir? Under UPA from 2004 to 2014, the excise duty collection was 5.6 lakh crores, an average of 56,000 crores a year. But under this regime, from 2014 to 2024, 23 lakh crore is been looted from the common man of this country, sir. An average of 2.3 lakh crores a year. So what is this, sir? This is not a failure? This is not daylight robbery? What can we call this, sir? So this government is heartless. Governance is heartless. I saw a news yesterday from UP, Ambedkar Nagar. A 7-year-old small kid, sir, running away with her books from a house that has been demolished by the bulldozer Raj of the Yogi Adityanath government. They claim for double engine government. But sir, there is no engine and no brain and no heart left with this party, with the ruling party, sir. Sir, I must say, it continues in Manipur also. Sir, A for Austria, B for Bhutan, Brazil and Brunei, D for Denmark, E for Egypt, F for France, G for Germany, Greece, Guyana, I for Indonesia, Italy, J for Japan, K for Kuwait, L for Laos, N for Nepal, Nigeria, P for Papua New Guinea, Poland, Q for Qatar, R for Russia, S for Singapore, South Africa, sir, U for Ukraine,
United Arab Emirates twice, United Kingdom, Uzbekistan, and United States of America multiple times. Our Prime Minister went for 38 trips abroad, and not one moment in Manipur he didn't visit, sir. He didn't find time to visit Manipur. M4 Mauritius was there, but he couldn't. To Minister, one second. No, 1 second. आप वित्त विधेयक में बोल रहे हैं? नो, मैंने बोल दिया माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, thank you very much, sir. Allowing me to. No, sir. He's called me. माननीय वित्त मंत्री जी. Thank you, sir. Thank you very much for allowing me to respond to the honorable members who spoke on the finance bill. माननीय सदस्य वित्त मंत्री जी इजाजत नहीं दे सकती, इजाजत मैं ही दे सकता हूँ यहाँ पे. चलिए माननीय वित्त मंत्री जी. He's allowed me. He's called me. Okay, sir. Thank you very much, Speaker, sir, for allowing me to respond to the discussions which have taken place on the finance bill. This finance bill, sir, we have attempted to do several things which, as per the expectation and aspiration of the people of India, and also the goal that the Honorable Prime Minister has given us towards a Vikasit Bharat by 2047, which is hardly 22 years from now. So we have done a lot of major steps through this finance bill. It's actually a bill which aims to provide tax certainty. It rationalizes a lot of provisions which are towards ease of doing business and also provides unprecedented tax relief in honor of the taxpayers of this country. So I'll straight go to talking about the direct taxation, in which the income tax is something which I'll spend a minute on, and then talk about the other direct tax reforms that we've undertaken. We've recognized the strength, spirit, and the contribution of the Indian middle class, and as a result, this budget has, under the new tax regime, come with a proposal that there will be now zero income tax payable for income up to 12 lakh rupees. So that is an average of 1 lakh rupee per month salary, which is going to be tax-free, completely tax-free. So for the salaried taxpayers, sir, this limit technically will be even higher. At 12.75 lakhs, which is inclusive of the 75,000 rupees standard deduction, and the marginal relief that is going to be applied for the taxpayers reduces the tax burden on the marginal rise in the income beyond the limit. So I will elaborate this point in response to some of the members who have asked specific question about what happens for those who are crossing 12 lakhs per annum income. I'm also glad to say that through this finance bill, we have brought in the new income tax bill, meaning I have not presented it as part of the finance bill. The introduction of the new finance bill during the budget session this time, which of course is rightly gone into a select committee's review, post which we will take it up in hopefully in the monsoon session, aims to. Yes, I thought I said that. I said it is not brought through the finance bill. It is a new income tax bill. Thank you. So brought during this budget session, but hopefully we'll have it taken up for discussion in this house during the monsoon session. So during this budget session, sir, not only the provisions and also certain reformatory steps taken during the through the finance bill, the rationalization of customs also is a major thing that I'll come to talk about in a minute. So
The steps taken for the customs duty reduction are also post elaborate discussion with the stakeholders. So there has been an element of Jan Bhagidari, both in the preparation of the new income tax bill and in the larger finance bill itself. The other direct tax reforms, sir, are worth mentioning. We have brought down certain TDS and TCS provisions. We've increased the thresholds so that the deduction of tax starts at a higher threshold rather than a lower. In respect of sale of goods, the requirement of TCS, particularly under section 206C 1H, is proposed to be done away with. We're completely removing it. Further, considering the difficulties which is faced by the taxpayer, we now propose to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. And that is a major step which will benefit the middle class, because in order to prove that the second house is also under their occupation, they do quite a few of paperwork and diligence has to be kept up. We are now saying you don't even need to do the paperwork. We take it as you stated for the second such occupied property. In order to streamline the process of transfer pricing, sir, and to provide an alternative to yearly examination, we have proposed that a scheme of determining arm's length price in international transaction for a block period of 3 years at a time. So this will be in line with the global best practices. So annually, people do not have to rush to prove what the transfer pricing commitments will be. Further, we've also, with a view to reducing the litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules have been expanded. Instead of having it narrow and expecting people to continuously come and prove that it is required for their business, we've widened it, and the safe harbor rules are therefore broader in favor of the assessee. Further, the presumptive taxation regime for non-residents is also now a lot more relaxed, particularly in the case of those businesses or resident companies which are operating in electronics manufacturing facilities, because electronics manufacturing demands supply of components in time, and those specific components will have to be brought in. If time lapses in their supply from the original equipment manufacturer, the production itself will suffer. So we've given them this particular presumptive tax regime, so that the non-residents who participate in these services, particularly given to a resident company, can benefit. So also for the startups, again, which is primarily for the middle class, government has proposed to extend the period of incorporation of startups by 5 years to allow the benefit available to the startups which are incorporated before 1/4/2030. So that's been an extension given so that there's greater participation of the newer registering startups as well. Again, to promote IFSC, the International Financial Services Center, government has proposed specific benefits to ship leasing units, to insurance offices, treasury centers of global companies which set up business in the IFSC. In order that they can claim benefits, the cutoff date of commencement for the commencement in IFSC has also been extended for 5 years, that is up to 31/3/2030. So these are in brief the steps through this finance bill taken up for direct taxation. Now, if I were to briefly look at the indirect tax, sir, as I said earlier, the customs rationalization, tariff rationalization, which was an exercise that we began 2 years ago, every year some or the other rationalization related steps have been announced in the budget. Now, this budget, this finance bill in 2025
relating to the customs aims to rationalize tariff structure and to address duty inversion. These will also support manufacturing units, domestic value addition, promote exports, facilitate trade, and also provide relief to the common people. So that has to be highlighted because it's not just the new income tax bill which is coming, but this finance bill itself is talking about rationalization of customs, which is a very big step forward so that importers can benefit from it. Exporting industry which import parts can also become cost competitive. So budget 2025, sir, we aim to boost domestic production and enhance export competitiveness by reducing duties on raw materials and inputs, making domestic products more cost effective, as I said a minute ago. So taking forward the comprehensive review of customs, about which I would like to elaborate, the rate structure announced in July 2024 budget, we are taking that forward. So as I said, the exercise began 2 years ago. We made a major announcement in July 2024 budget. We are taking it further in this budget also. So this finance bill actually proposes to remove 7 customs tariff rates for industrial goods. The 2 tranches of rationalization of customs tariff carried out so far have reduced the number of tariff rates from 21 to 8, including the zero-rated goods. Many Indian exporters have become cost competitive. And one matter which will interest honorable members is when you're looking at cess and surcharge, we made sure that on no one item on the customs duty where it is being imposed, both cess and surcharge would be imposed. We are looking at that, and therefore in this budget, in the finance bill, we have proposed that only one can be applied, and therefore only one cess or surcharge will be applied on any one item. So for instance, social welfare surcharge will be now exempted from 82 tariff lines which are subject to a cess. So the double burden of both cess and surcharge on any particular item is being removed. In addition, sir, we also propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing to the list of exempted capital goods to boost domestic manufacturing. So this will actually have a bearing. So EV battery manufacturing will be a lot more cost competitive because 13 additional capital goods are being exempted. So 28 additional capital goods for the mobile phone battery manufacturing are also being exempted. Sir, we also propose in this finance bill to fully exempt basic customs duty on cobalt powder, waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. So this is in addition to the 25 critical minerals which were fully exempted from the basic custom duty in the July 2024 budget. So we have not wasted time. After that, we've rapidly also brought in more goods, particularly critical minerals, into this exemption. So the Customs Act as 1962 does not provide, as it prevails now, does not provide any time limit to finalize provisional assessments leading to uncertainty and cost to trade. So as a measure of promoting ease of doing business, in this finance bill, government has proposed to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. That will itself bring in a lot of certainty for those importers and exporters. Sir, we also propose to extend the time limit for end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. What this actually means is some exporters, in order that they produce goods for export, import some components. The customs duty is not paid because they're bringing it
for the production of goods which have to be exported, because we don't export taxes. But for that use of that component which is imported, we normally give 6 months, saying you brought it in June 2025, by December 2025, you should have sent that product out, that product which you manufactured with this particular item imported. Many exporters found it difficult. The 6 months period is not sufficient. So for them, we have extended that time period to 1 year. So this is more an export friendly measure that we have taken. So we have actually allowed the industry to better plan their imports, and also we are providing operational flexibility. So these are as about the finance bill as it was presented to the House. We are of course coming up with some government amendments. The amendments which are being brought, 4 of them I'd like to highlight. The simplified safe harbor regime in section 9A for investment funds managed by fund managers in India. Normally, these fund managers are expected to verify that no one exceeds the 5% limit in terms of direct investment or indirect investments. So it is proposed to be made further simpler by removing this 5% condition for monitoring indirect investment, because it becomes too cumbersome for them to search for who the investor is indirectly, and that itself hampers investment, so we are removing that. Clarificatory amendments in the provisions for IFSC's provisions and presumptive taxation for service providers for electronic manufacturing units is also being brought in as government amendment. And the third one, for clarity and consistency, a government amendment is coming in for small changes in the block assessment provisions, and then the 6% equalization levy, which was being proposed, which was in effect for advertisement and other things, is being proposed to be removed, so that we can address the uncertainty in the international economic conditions. So largely, these are the major. Yes, I'll answer. These are my opening statements. I'll come to answering each one of the members' points. I will come to answer. So these are the finance bill related. So then I now come to addressing individual members who have raised issues or sought clarification. So I'll go one by one. By the issue, 2 or 3 members could have spoken on each of the issue. I'll go by the issues. So on the income tax, as I said, members have shown a concern for incremental increase over 12 lakhs. What if, I think this was a member, Sri Neeraj Maurya, who had raised this question about if income is 12.10 or 12.20 lakhs, tax will have to be paid. So ensure taxes are graded from 12 lakh rupees is what the suggestion came from Sri Neeraj Maurya. So I want to say that even while I read the budget speech, we made it very clear that marginal relief is being granted. Under the provision of section 87A, it has been ensured that the tax payable by a person having income marginally above 12 lakhs is required to pay only the marginal amount of tax equal to the amount of income above 12 lakh, so that his carry home is also 12 lakh of rupees. So he may earn incrementally more, but he'll still take back to his home 12 lakhs, and that increment on the incremental amount, the calculation is also very well explained. For instance, with an income of 12.10 lakh, rupees 10,000 is what he earns over the 12 lakh that he already earns. So for that 10,000 rupees, it will be paid as income tax only. Tax without marginal relief on that person earning 12.10 lakh would have been 61,500. So we have given the marginal relief where he, for the 10,000 rupees, he earns more than the 12 lakh. The 12 lakh is exempt from tax, but the 10,000
will have to be paid as tax. He would have ended up paying 61,500, whereas because of the marginal scheme that we've added into this scheme of income tax, he ends up paying only 10,000 rupees. So, and when income of rupees 12.20, only 20,000 will be paid, and he will still take the 12 lakh. Otherwise, the marginal relief, if not given, he would end up paying 63,500 rupees. So the marginal relief has been brought in for the incremental increase in pay. Sir, personal income tax has been reduced by way of rebate. This can be altered in the coming years. It may be done away with in the future years if income tax collection is lower. Was one of the questions asked by an honorable member here. Sir, I can only say, if you look at the track record, even during COVID, we did not raise tax. So where we have come up with a rebate in order to benefit the middle class, an element of suspicion is being brought in, saying, what if tomorrow you... I'm sorry, sir. Sorry? 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 On petroleum products? Excuse me, sir. I will answer what I've heard till now, but if members want to ask these questions, I will also point out to them, citizens are our citizens. I have not raised any rates on any item, nor did I increase income tax. But if fuel is being brought to discussion, and that too by honorable member from Tamil Nadu, I will say their manifesto promised. They have not fulfilled their promise, and he is asking me question. Amazing. So, sir, N.K. Premachandran ji has said collections in personal income tax have shown considerable buoyancy in the last few years. His question was, how are you showing income tax collection growth while giving 1 lakh crore revenue foregone? I want to let the honorable member know, N.K. Premachandran ji, the calculations are not done without taking these 1 lakh foregone, income tax reduction. We've spent a lot of time, and most often, in fact, I would want you to please look at the last 5-6 years of the budgets. I've been accused of underestimating, never overestimating, but I've replied each time saying our calculations are realistic. And that is what I will use to explain in answering your question. Collections in personal income tax have shown considerable buoyancy, sir, in the last few years. They have been increasing around 20% year on year. For the year 25-26, the personal income tax projection is 13.6 lakh crores. The RE for 24-25, I'm talking of the projected, which is BE for 25-26, is 13.6 lakh crores. The RE of the year that we are completing, which is completing on 31st March now, is 12.2 lakh crores. So 12.2 lakh and going to a BE of 13.6 is done with a certain realistic calculation. The projection, sir, of growth for 25-26 is around 13.14%. The effective dip of around 7% in personal income tax growth is on account of the factoring in of the revenue foregone, which is 1 lakh. So the dip is already shown for the 1 lakh crore which is being foregone. So the calculation is after showing the dip. And that is why it is a realistic number. So the projected collections for income tax for 25-26 are based on sound data. Sir, income tax receipts. So the growth rate question which Shri N.K. Premachandran ji raised, I think I have
sort of answered it. I'll now move to the privacy issues, which people have raised. Privacy issues, which is not so much the finance bill related matter. It is a matter which is being taken up from the new income tax bill, which is with the select committee. But I want to assure the honorable member that a provision, particularly to look at the data, exists in the current environment, particularly in certain cases of search and seizure authorized by the competent authority, where access code is not available and the person concerned is not cooperating with the proceedings, the authorized officer may gain access to such computer system, exists even now. Now it is now being specifically brought in and mentioned in the new bill because what is mentioned in the 1961 Income Tax Act is books of account physically kept, and then the ledgers, and every manual record which will show about your income, your expenditure, your monies and all that is specifically mentioned. And since the 1961 Act does not mention the digital, most often it becomes contentious. People go to the court or question, all right, I've shown you my ledger, but why do you want my passcode? So you will see my digital. Becomes an issue. So in order that what prevails now with a gap, that gap is getting filled up in the new income tax, which is before the bill, which is before the select committee. So in this, I will take a minute to explain as to why that digital thing will have to be brought in. Sir, encrypted messages and mobile phones, unaccounted money to the extent of 250 crores have been detected when the encryption has been decoded. One. Second, evidences which have been seized from WhatsApp messages, particularly crypto assets worth more than 90 crores, and the network of people involved in it have all come out of WhatsApp messages. Now, if the law does not give you the legal backing, in spite of the fact and evidence being in your face, you will have to go stand in the court to say, yes, but the law doesn't provide, but the evidence is here, the money is being misused, it is unaccounted money. It becomes tedious. And therefore, the digital element has to be brought in. I'll bring in one more example, sir. WhatsApp communications and incriminating materials found from such conversations helped to unearth the syndicate and identify the end beneficiaries of bogus bills worth 200 crores. So do I go to the court again saying, but the law doesn't allow me to look at WhatsApp messages? So we need to bring in. There's also another example, sir. Capital gains of 150 crore on sale of land was reduced to 2 crores by creating false documents of land cost of acquisition, and also using all payments in banks statements as claims of investments and improved expenditure. So the WhatsApp group of key persons include many professionals also, unfortunately. So we had to contemplate on how to be lawfully on the side of law to say that these are evidences which are incriminating in themselves. Therefore, it has been brought in. I can also give one more, which is evidences have been found with the help of Google Map History. So in the case of Google Map History, sir, found on the phone was used to determine the frequented locations of individuals who enabled location history. This enabled detection of hideouts where cash and unaccounted transactions are kept, and that also came of help. So there is a need for us to change or add the digital elements into the act itself. So one last example for that, sir. The prohibition of Binami properties, Instagram accounts was used
to establish the beneficial ownership of vehicles. Expensive vehicles, no ownership details, track it at the going backward and forward. We could break the case by using Instagram. So benefit of technology for the sake of country's exchequer. So then questions about pending appeal cases, that CBDT has poor dispute management and pursues all cases. So I would like to say, sir, in order to reduce the number of pending appeals, several measures have been taken by the CBDT. One such a thing is the enhancement of monetary limits for filing of appeals by the department before the Income Tax Appellate Tribunal, High Court, or the Supreme Court. Creation of new posts of joint commissioners for appeals exclusively. Also, we came up with the direct tax Vivad Se Vishwas scheme in 2020 and also in 2024. Twice we brought this, and this has helped in reducing the pending appeals. And the famous, or not so famous, repetitive appeal. A new section 158AB is inserted so as to provide that if a question of law in the case of an assessee is identical to a question of law pending in appeal before the jurisdictional High Court or the Supreme Court, or in any case, the filing of further appeal to the appellate tribunal or the jurisdictional High Court in the case of assessee shall be deferred till such a question of law is decided by that relevant court. So that's been a major step in holding the department back, the CBDT back, from going into a case which is already, a similar such case is already in a court. We don't want to pursue it. We'll wait for the final verdict to come from there. So also there was this question by Mohammed Bashir ji, dispute resolution mechanism of department is very poor. So I want to inform the member that the dispute resolution mechanism following the measures that we've taken, provided we've brought in a provision of updated returns, and that's been introduced for voluntary compliance. Sir, I'm sure the honorable members will be aware that we had already enabled updated additional updated returns so that assessees can correct the not declared income when they want to modify their assessments. For within the first year, if you modify and come up, we only say pay 25% additional. And if the second year they come up, we say pay 50%. And these two, first year and second year modified amendments, provisions have actually been well received by the assessees. So we are encouraged to bring in the third year and the fourth year modified assessment provision for the benefit of the tax assessees, that when they came in the first year, they paid only 25%, second year they paid only 50%, third year they will be now given the option to choose, and they can just pay 60% and close the whole business, or the fourth year, if they want to modify, they pay 70%, and that is where the story would end. So the dispute resolution committee has also been constituted. A taxpayer having taxable income of up to 50 lakh and disputed income of up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee for relief, and therefore that element of uncertainty is being removed. E-verification system is also being brought in to increase voluntary tax compliance. E-verification system 2021 was notified in December 2021. I just wanted to highlight that, sir. We carried out a nudge campaign, sir. I'd like to inform the honorable members about it. This is in relation to assets and monies kept abroad. I'm sure the honorable members, many of them would recall that in 2018, my eminent predecessor, Sri Arun Jaitley, had made an announcement in the House that there is an agreement globally now to share information. India will be receiving a bulk of
information of Indian accounts being held outside, and every year we shall use that, and where prosecution has to be, or where cases will have to be filed in the court, because not everybody's name and account number which comes in are of people who are holding tax evaded money. They can be genuine accounts also, because the stock that they send, the bulk, the data dump that they give us has everybody's account in it. So using that, we have really been nudging taxpayers, saying we've got this information about your property abroad, about your deposits abroad. Would you want to look at it and come back to us? That has actually helped us, and I'd like to highlight how. We nudge the taxpayers to voluntarily disclose their foreign income and assets. SMSs and emails were sent to around 19,501 select taxpayers, asking them to review their income tax returns filed for the year 24-25 based on the information available on the income tax about their foreign deposits. The result of that campaign, I'm happy to share with the honorable members, out of 19,501 taxpayers, a total of 11,162 taxpayers revised their returns and filled scheduled foreign assets form and declared an asset, total assets of 11,259.29 crores, disclosing foreign income of also 154.42 crores. So the nudge campaign about properties abroad which have never been disclosed have been, because of the campaign, successfully at the ease of the tax assessee been declared, and also the monies due have been paid. In addition to this above, 883 taxpayers reviewed their IT returns and corrected their status from resident to non-resident. Even that correction happened because we were able to give them the facts and ask them to either accept or give us a reply about it. So in their revised return for the year 24-25, they have said, no, they are not residents, but they should actually be treated as non-residents. So due to this outreach, there was a ripple effect, sir. This resulted in an addition of 13,516 taxpayers declaring foreign assets worth 7,564 crores and foreign income of 353 crores, or approximately, that is, in their revised return for 24-25. So cumulatively, this simple nudge has resulted in declaration of foreign assets worth 29,208 crores and foreign income up to 1,089 crores in the Schedule FA by 30,161 taxpayers. So this attempt by the Government of India to make sure people who have not declared their assets can now declare it by us taking a proactive nudge-based approach. So I'm very happy that this step is being responded well by the assessees as well. Sir, I've already probably said enough on the TDS, but I just want to say one line. So the two pillars of TDS-related problems are non-filers and the search for the valid PAN number. So this finance bill, we have proposed to omit the section 206AB and section 206 CCA, under which higher rates of TDS and TCS were levied in cases where the deductee or collectee were non-filers. Most often, non-filers were the ones on whom action had to be taken because they collected the TDS but did not deposit with the government's account, or they did not show because PAN and Aadhaar card linkages were not available with them. So we have very clearly said, in order to reduce the compliance burden
particularly for very senior citizens, certain non-residents, etc. We have clearly kept on the PAN and Aadhaar, we have kept the non-residents and also senior citizens out. And this provision has also been brought under the omission category. So there was this question by several members, Vishal Dada Patil, Shri Vishnu Prasad, and also Shri Mohammad Bashir, as to why the two tax regimes should continue to run parallel. I just want to say, sir, it is a stated policy of the government to phase out exemptions, deductions, and other incentives, while at the same time gradually reduce the tax rates. And we have provided as an option rather than a forceful decision to say we are shutting down the open. We are not. We are running both in parallel so that people who benefit from the old regime can please continue to be so. I am not drawing them to the new regime till such a time they either have exhausted all the exemptions or they choose to come here because of the rates. So that is why both the regimes continue. Sir, Shri N.K. Premchandran ji spoke about why did you have to reduce the corporate tax? It is only benefiting the large corporates. That's not true, sir. It benefits many companies which are medium-sized and middle as well. But has it benefited India? Yes, it has. According to the World Investment Report 2023, India was the third largest recipient of greenfield investment projects globally, with about 1,008 greenfield projects announced. Additionally, the number of international project finance deals in India rose by 64%, making India the second largest recipient of such deals. So investments come, they create more jobs, entrepreneurial opportunities are available for middle class. All this has been made available because of the corporate tax reduction. Sir, so I want to just highlight the fact that, on GST related issues, sir, several members spoke about issues related to GST. I just want to highlight, sir, that the allegation that the GST is not progressive is absolutely unfounded. It is not true at all. I would like to highlight how, sir. Wealthiest 20% of Indians contribute 41.4% household GST and 14% of the total GST. That is, wealthiest 20% of Indians contribute 41.4% of household GST and 14.2% of the total GST, while the bottom 50% contributes just 28% of household GST and 9.6% of the total GST. So this argument that it is not progressive is not right at all. The poorest 50% face an average effective GST rate of 7.3% only. Under the pre-GST regime, sir, the average indirect tax rate was around 15%, whereas as of March 2023, after the GST has been introduced, the average GST rate is just 12.2%. At the time of introduction, it was 15. In pre-GST, it was 15. Now it is only 12.2. Sir, I've repeatedly said several times that the taxes on ordinary people's daily use products are far lower. It have been brought down. I'm not going to take this August House's time by reading the list completely. I will probably put it on the table for any member to look at. NIPFP, a big research center, shows that the most consumer items face low or no GST taxes at all. Less than 3% of common consumption items attract the highest rate of 28%. So 28% tax is on only less than 3% of common man consumption items. Nearly 60% of consumption items face 5% or lower GST. So GST is exempted on several items, and I would like to broadly categorize them: unbranded food items, certain life-saving drugs, healthcare, education, public transport,
sanitary napkins, hearing aid parts, agricultural services, etc. are completely exempt. So, several members seem to have said no discussion on reducing GST and reduce the number of slabs in this parliament. So the GST Council is a constitutional body. That's where the discussion happens. And subsequent to the decision taken by a group of ministers, and in that group of ministers, finance ministers of Bihar, UP, Rajasthan, West Bengal, Karnataka, and Kerala are all members of the committee. They are deciding on how to reduce GST and also reduce the number of slabs. Post that, if there are any amendments to be made in the CGST, we will come here. So the discussion on the reduction can be a part of the general discussion, but the actual discussion and the decision happens at the GST Council. So, sorry? Yes? Yes? Yeah, HSN code is something which the council will have to work with the authorities who decide on the codes. So, 5% GST is imposed on muscular atrophy drugs, where the cost of the drug is 80 lakhs for 1 year. This was Srimati Sangeeta Roy from AITC. I just want to highlight, sir, that the IGST on import of drugs for rare diseases, including muscular dystrophy, has been fully exempted when imported by the patients for personal use. So there cannot be a GST on it. So I just want the member to please hear this. Once again, I'll repeat that the import of drugs, the IGST on such imports for rare diseases, including muscular dystrophy, has been completely exempted for patients for their personal use. Second, they are also exempted for person or institution which are recommended under the listed centers of excellence for their research or for any other testing. So they're all exempt, sir. So they were questioned. Hebe Aiden had raised this question about how Lord Ayyappa's Prasadam has been put under GST. And also talking about food prepared, like rice dumplings, are also under GST. I just want to say, sir, prasadam supplied by religious places, like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, are completely exempt from GST. I want the honorable members to kindly take note of this. They're completely exempt from GST. Sir, as regards reducing the rates on items in which the tax is being levied, as I said, there is a GOM which is looking into it, particularly for the food sector related queries. The GOM will take a call. So then 18% GST on prosthetics is insensitive. Reduced GST on prosthetics and life-saving equipment was observed by one of the members. I just want to say, sir, from 2017 to 2022, like as it was before, the prosthetics attracted 12% GST till 22. Then in the 47th GST Council held in June 2022, the GST rate was reduced to 5%. Life-saving medical equipments, most medical devices such as X-ray apparatus, alpha, beta, gamma radiations for medical surgery or veterinary purposes attract concessional GST rate of 12%. Artificial parts of the body attract 5% only as GST. So I just want to be clear that GST is not levied on certain critical life-saving equipments. So there was this question about Suksham Sinchai, the micro irrigation. Devesh Shakya, member, asked this question.
The GST rate on drip irrigation systems, including lateral, sprinklers, and products, has been reduced from 18% to 12% as per the decision taken by the 25th GST Council meeting on 18 January 2018. On the GST cess, there was a DMK member, Malayarasan, sorry, the spelling is wrong here. Malayarasan ji had asked this question on GST compensation, sir. I think I've answered this question several times. GST compensation, first of all, let me make it clear. There is no due whatsoever to states on GST compensation. When they have sent the utilization certificate or audited certificate, not utilization, the auditor's AG's certificate, everybody's money has been given. The law itself says that after June 30th, 2022, there's no compensation cess. So we are not collecting. What we are collecting now is actually being collected to repay the debt that was taken during the COVID time. When there was no income to share, we had to borrow to give the states, and that is what is being collected now, and that's also should be ending by early 2026, which is another 7-8 months. So on the GST or insurance, again, the GOM is looking at it, and they will come with a decision, and that can be taken up by the GST Council, so I'm not elaborating much on it. So GST, again, like the temples, there has been this question about, are you levying GST on education and healthcare related items? Again, I want to explain, sir. Following are the exemptions that are already provided to the education sector. Services provided by an education institution to its students, faculty, and staff are completely exempt. Services by an education institution by way of conduct of entrance examination is exempted. The following services are also exempted. Services related to admission to or conduct of examination by such institutions are exempt. If provided to preschool or up to higher secondary schools, any service, such as transportation of students, transportation of faculty and staff, catering, including midday meal schemes sponsored by the central government or state government or the union territory, security or cleaning or housekeeping services performed in such education institutions are all exempt from GST. Supply of online educational journals or periodicals are exempt, and that is also provided for higher education institutions. Educational institution has also been defined. I just want to clearly say, so what is an educational institution? Defined as an institution providing services by way of preschool education, education up to higher secondary school or equivalent, education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by any law for the time being in force, and education as a part of an approved vocational education course. Similarly, sir, when it comes to health, GST is fully exempt on healthcare services provided by a clinical establishment, an authorized medical practitioner, or a paramedic, and healthcare services includes diagnosis for illness, injury, etc., in any recognized system of medicine in India, and that's been clearly stated in the Central Act as well. So there was this question about reduction of GST on agricultural inputs. I just again want to explain, sir. Seeds attract 0 GST. There's no GST on seeds. 5% GST on fertilizers. Agricultural implements, manuals, manually operated or animal driven, and hand tools attract 0 GST. And then tractors attract 12% GST. Agricultural pumps attract 12% GST. So a proposal to reduce GST on farm inputs like tractors
from 12% to 0, farm inputs like drip irrigation system, other agricultural equipment, pesticides, fertilizers to 0 was placed on the 45th GST Council meeting held on 17th September 2021, but the Council did not recommend it then in 2021. I want to just put that on record, but of course, now the group of ministers is looking into it. So the items will be looked at by the GOM and they will take a call, sir. Sir, there were several other questions related to the budget, not so much on to the finance bill. So I'm not taking those, except for the proposal. So there were just one thing on which, although it doesn't relate to the finance bill, I will seek your indulgence. I'd like to answer this. Issue raised by Sri Neeraj Maurya about benefits to the vulnerable sections, SCs, STs, OBCs in the government initiatives. I will have to list them out, sir. Please give me that few minutes. Sir, under PM Kisan, around 76% of the farmers are SC, ST, and OBC. I'm not sure if Neeraj Maurya ji is here, but I can see his party members being here. I hope you convey this to him. Under PM Awas Urban, in the last decade, 1.18 crore houses have been built for the poor. Of that, 1.18 lakh crores is 1 crore and 18 lakh. 42 lakh have gone for OBCs, and 23 lakh houses have gone for scheduled castes. 60% of the houses under the PM Awas Yojana Gramin have been given to SC STs. 33% of the loans under PM Mudra Yojana have gone to SC ST OBC led enterprises. 70% of the beneficiaries under PM Swanidhi are SC ST OBCs. Stand Up India schemes, sir, which are helping the SC and ST entrepreneurs, 7,000 crores have been disbursed as loans for SC STs. 65% of the loans under PM formalization of micro food processing enterprises is gone for SCSTs. And October 24, Honorable PM launched the Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan to address critical gaps in the social infrastructure, health, education, and livelihood development in 63,800 tribal villages. And then the Janjatiya Gaurav Divas in 2023, which was announced, PM Modi launched PM Jan Man for targeted support to 75 particularly vulnerable tribal groups for whom they are residing in 18 states and one union territory for safe housing, clean drinking water, education, health, road and telecom connectivity, electrification, and sustainable livelihoods. I seek your indulgence, sir. I would not go further explaining more. For those non-budget related questions which honorable members have raised, the benefits of PLI scheme and so on, I'm not elaborating more. KC Venugopal ji asked about the pay commission. I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing
the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because if, yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008, but in between there were litigation. How could I violate that? So I'm not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government. Thank you. Well, if you can cast out, yes, if you've done several wrong, we talk about it. We don't shy away. We don't shy away. But this decision, which was, I don't need to hide. I'm saying it openly. I'm saying it before you. If it wasn't in the court, I would have done it earlier. Thank you, sir. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री डीन कुरियाकोस संशोधन संख्या 1 से 4। प्रश्न ये कि श्री डीन कुरियाकोस द्वारा प्रस्तुत संख्या 1 से 4 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में सर मूव नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे, सर मूव नहीं कर रहे ना, मूव नहीं कर रहे सर। वालों के संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री स्वागत राय संशोधन संख्या 65 से 72। Sir, I move my amendment. Page 4, line 7 to 7. प्रश्न ये कि श्री स्वागत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 65 से 72 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ।
प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 25। Sir, I move the 1 minute, sir. I move the amendment, sir, number 25. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहे, जो विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 26-27। Sir, I move the amendment number 26 and 27. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 और 27 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 28 से 23। 33, sir. So I move the amendment number 28, 29, 30, 31, 32, and 33. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 से 23 को स्वीकृत किया जाए। 28 से 33 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 6 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 6 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 7 विधेयक का अंग बना। श्री स्वागत राय जी, संशोधन संख्या 73। Sir, I move amendment number 73, page 30, a substitution clause for lines 4 to 8. Sir, I would like the finance minister to clarify that the Americans are saying that the tariffs should be equalized. American team has arrived in Delhi. प्रश्न ये कि स्वागत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 73 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न के खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बना। स्वागत राय जी, संशोधन संख्या 74। I move amendment number 74 on page 30. प्रश्न है कि श्री स्वागत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 74 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 3 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 34। So I move the amendment number 34. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 11 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 11 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है खंड 12 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 12 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 35 और 36। So I move the amendment number 35 and 36. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 और 36 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 13 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 13 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 14 से 16 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 14 से 16 विधेयक का अंग बना। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 75। Sir, I move amendment number 75 on page 34. प्रश्न है कि सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 75 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 17 से 19 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 17 से 9 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 37। I move the amendment number 37. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 76। Sir, before I move the amendment number प्रश्न है कि 76, sir, सौगत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 76 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों पर संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है खंड 20 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 20 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 21 और 22 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 21 और 22 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 38 को प्रस्तुत करें। 38। Sir, I move the amendment number 38. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 22A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 22A विधेयक में जोड़ा गया। प्रश्न है कि खंड 23 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 23 विधेयक का अंग बने। श्री डीन कुरियाकोस, श्री N.K. प्रेमचंद्र, संशोधन संख्या 6। Sir, my amendment is regarding changing in the income tax slabs table. That table may be accepted. I am moving the amendment.
प्रश्न ये कि श्री एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। स्वागत राय जी, संशोधन संख्या 77। Sir, before I move amendment number 77 on page 38 lines 14 to 28, let me state प्रश्न that है कि स्वागत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 77 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वहां के, जो सदस्य विरोध में ना के, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 24 से 36 विधेयक अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 24 से 36 विधेयक अंग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 39। I move the amendment number 39. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 37 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 37 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 38 और 39 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 38 और 39 विधेयक का अंग बना। श्री स्वागत राय जी, संशोधन संख्या 78। Sir, I move amendment प्रश्न number ये कि स्वागत राय जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 78 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये खंड 40 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 40 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 40 को प्रस्तुत करें। So I move the amendment number 40. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 40A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 40A विधेयक में जोड़ा दिया गया है। प्रश्न है कि खंड 41 से 46 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 41 से 46 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 41। So I move amendment number 41. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 41 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 47 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 47 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 42 से 44। So I move the amendment 42, 43 and 44. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 से 44 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 48 यथा संशोधित विधेयकांग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 48 यथा संशोधित विधेयकांग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। I move the motion, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी अब संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करें। 45। Sir, I move the amendment number 45. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 45 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 48A 48B विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 48A 48B विधेयक में जोड़ दिया गया है। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 46। So I move the amendment number 46. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 49 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 49 यथा संशोधित विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 47 और 48। I move the amendment number 47 and 48. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 और 48 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 50 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 50 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव प्रस्तुत करें। So I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी अब संशोधन संख्या 49 को प्रस्तुत करें। So I move amendment number 49. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में वह संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 50A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में नया खंड 50A विधेयक में जोड़ दिया गया है। प्रश्न है खंड 51 से 58 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 51 से 51 विधेयक का अंग बना। श्री सोगत राय जी संशोधन संख्या 79। Sir, I move the amendment number 79. The American sir, आप थोड़ा ख्याल रखिए, वो हमारा सब टैरिफ कम कराएगा। प्रश्न है कि सोगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 79 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 59 से 140 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 59 से 140 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। So I move the motion. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी अब संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करें। So I move the amendment number 50. श्री एन के प्रेमचंद्र संशोधन संख्या 80। Sir, before moving the amendment, I would like to raise a very serious point of order. Under Rule 219 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, and under Article 110 and 117 of the Constitution of India. So the proposed amendment by the Honorable Minister by virtue of amendment number 50 is the amendment to the Finance Act and amendment to the validation of the Central Civil Service pension rules and principles of expenditure on pension and liabilities from the Consolidated Fund of India. That means this is a matter relating to the pension rules. It is nothing to do with the Article 110, 1A or 1A to G and F of the Constitution of India. Sir, what is Article 110, 1A? So many times this House has debated on this issue. That is what is called a money bill. 110, 1A, it is very specific and clear that a money bill can be introduced only in the House of the People. Sir, I would like to quote 110 definition of a money bill. For the purpose of this chapter, a bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters. I would like to stress the word only. What are the matters? The imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, the regulation of the borrowing of money, the custody of the consolidated fund or contingency fund, the appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India, declaring any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India, and the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India. And the last portion, that is a portion that is G, any matter incidental to or any of the matters specified in subclause A to F. Sir, this is the provision which is invoking by the Honorable Minister so as to put this amendment. There, I would like to relay one Kaulan sector. It is very clear that in Kaulan sector, it is specifically mentioned. Sir, one second. Regarding the Kaulan, and it is updated version. It is also updated version. It is very clearly stated that money bill and financial bill is well distinguished. So I will quote one page 792 of the Kaulan sector. However, finance bill. However, it does not contain any provision intended to make permanent changes in the existing laws unless they are consequential upon or incidental to the taxation proposals. I would like to underline, unless these are consequential upon or incidental to the taxation proposals. Sir, here what is the amendment? The proposed amendment is, that is already the ministry has replied. Sir, one second, that is a matter. Through this amendment, I would like to highlight the matter. The thousands and lakhs of pensioners in the country, they are entitled to get the pensionary benefit in the revised Central Pay Commission. Suppose after 2026, the last pay commission. Sir, one second. Suppose it is not being applicable to the. So my point is, sir, this is, suppose if you are allowing this amendment to be incorporated in the Finance Bill 2025, the character of the money will be changing. That is not applicable. There is a Supreme Court judgment of 2019. It's very specific. So the point of order may be clarified and it may not be allowed. That is my point of order. And subsequently, I will move the amendment. N.K. प्रेमचंद्र जी ने जो विषय उठाया है, रूल्स 219 की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रूल्स 219 में गैर कर प्रस्तावों को शामिल करने की संभावनाओं को नकारता नहीं है। इसलिए एक वित्त विधेयक में गैर कर प्रस्तावों को भी शामिल किए जा सकते हैं। अतीत में कई बार ऐसी हो चुकी और ये परंपरा भी रही है। इसलिए मैं माननीय प्रेमचंद्र जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको निरस्त करता हूं।
प्रश्न ये कि श्री एन के प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 80 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 50 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नया खंड 141, 142, 143, 144, 145 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड नया खंड 141, 142, 143, 144, 145 विधेयक में जोड़ दिया गया है। श्री एन के प्रेमचंद्र जी संशोधन संख्या 7 से 22। Sir, there are 16 proposed amendments, 16 amendments to first schedule. Out of which I would like to make only one point. That is, okay. Sir, regarding 10% is the tax at the deduction at the source. Let it be 3% for the. प्रश्न है कि एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 72 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनी। श्री एन के प्रेमचंद्र जी संशोधन संख्या 23 और 24। Sir, these are two amendments to third schedule. Sir, one second. Cashew industry is facing severe crisis. Import duty on cashew. प्रश्न ये है कि एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 और 24 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत है। माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 51 से 59। Sir, I move the amendment number 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 and 59. प्रश्न